Hello everyone, good morning. So आज हमें जो द पर्सपेक्टिव मैगजीन अच्छी आई मीन द नेशनल करंट अफेयर्स रो मंथली मैगजीन नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स ओके ताकू आज हमें डिस्कस करिबा बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास प्लीज लेट मी नो जो माने भी लाइव चैट रे लाइव अछंती लाइव देखुचंती कि ऑडियो एंड जो मु एठी पीडीएफ ओपन करिची सब किछि क्लियर अछि कि नाही स्पेशली ऑडियो. So I am giving 1.5 minutes to inform me, and after that I will simply assume कि audio and video dita jako clear अछि and class टी आमे start करिवा. ओके डिम्पल कहउचंती क्लियर अछि. थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो. फर्स्ट हमें देखिबा कि मैगजीन रे हमें कोन कवर करूचे. जनवरी मंथ रे जहाँ भी करंट अफेयर्स रहिची इन इंग्लिश बाइलिंगुअल रहइबो ए क्लास रो मोड तो ताको हमें कवर करिवा. ठीक अछि. एंड जहाँ जहाँ एग्जाम पाई कि इम्पोर्टेंट से गुडी को हमें देखिवा. द पर्सपेक्टिव एथिरे हमर कवर करा जाय नेशनल करंट अफेयर्स. एटा गोटे नेशनल करंट अफेयर्स मैगजीन जोटा कि मंथली रिलीज हुए. जनवरी 2026 रो ऑलरेडी रिलीज हेई सारिची. तो आमे क्विकली रिवाइज करिबा कि कोन कोन सब न्यूज रे थिला. आपण माने तो करूथिबे ऑब्वियसली वीकली करंट अफेयर्स क्लास. टॉपिक्स हमर कोन कोन कवर करियर अछि आगे हमें देखिबा. सेटा पॉलिटी एंड गवर्नेंस रो रहिबो कि फाउंडेशन डे ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया. देन यूथनासिया उपरे गोटे डिबेट जोटा चलीची वेदर इट इज लीगल एटा करा जिबा कथा कि नुहे. देन WEF रो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आसीची. इंडियाज मेरिट दिस इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. जहाँ भी रिपोर्ट स्टैटिस्टिक्स इंडेक्स रैंकिंग जहाँ भी आसे से गुडी को प्रीलिम्स ପାଇଁ बहुत इंपोर्टेंट. एंड साथ ही साथ सेई डेटा को आपण जदि आपनकर मेंस आंसर राइटिंग रे इंक्लूड करिवे ताहले गोटे बहुत भला इंप्रेशन आसी थाए. इंडियाज मैरिटाइम स्ट्रेटजी, एज ऑफ कंसेंट आउ एडोलसेंट ऑटोनॉमी, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऊपर न्यूज अछि. नेशनल यूथ डे, नीति आयोग ऑन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया. देन गुड गवर्नेंस डे, यूजीसी रूल्स आमे देखिबा. डेमोग्राफिक विंटर एंड इंडियाज नैरोइंग डेमोग्राफिक डिविडेंड. ए दीटा टर्म अछि. डेमोग्राफिक डिविडेंड तो समस्त डे टू डे प्रिपरेशन टाइम रे सुनुथिबे बट डेमोग्राफिक विंटर आ माने कोन एंड सेटा को इंडिया रो नैरोइंग डेमोग्राफिक डिविडेंड संगे केमिति रिलेट करा जाउची ताकू देखिबा. इंटरनेशनल रिलेशन रे इंडिया आउ EU माने यूरोपियन यूनियन रो जो FTA ता ऊपर डिस्कशन करिबा. इंडिया जर्मनी देन पैक सिलिका, इंडिया रो फॉरेन पॉलिसी, इंडिया न्यूजीलैंड ऊपर इंडिया न्यूजीलैंड रो FTA ऊपर भी न्यूज अछि. सो इकोनॉमी रे इंडिया MSME सेक्टर, देन इंडिया रो राइट सुप्रीमेसी, ग्रॉस ग्रोथ टू जेन्युइन ग्रोथ केमिति सेटा ट्रांजिशन हेइची.
गति शक्ति देन व्हाइट रिवोल्यूशन ऊपर न्यूज अछि एमएसएमई स्कीम्स स्टार्टअप इंडिया को गोटे डेकेड हो जाइए माने 10 वर्ष हो जाइए एंड हाउस होल्ड स्टेबिलिटी सेटा गला देन आरबीआई रो स्टेट फाइनेंसेस रिपोर्ट आसीची इकोनॉमिक सर्वे रो किछि हमें डेटा देखिबा एनवायरनमेंट ज्योग्राफी रे स्नोफॉल डेफिसिट कंजर्वेशन ऑफ ग्रासलैंड्स 10 years of Paris Agreement and Madhav Gadgil and Western Ghat Ecology Expert Panel Madhav Gadgil Committee climate resilient agriculture right to clean and healthy environment nature based solutions sponges केमती natural bioindicators and bioremediators heavy metal pollution southern ocean carbon anomaly then science and technology PSLV failures ଆଉ ତାଙ୍କର strategic implications କ'ଣ ରହିଛି marine ଆଉ space biotechnology remote sensing and India's IRS program इंडियार एआई मिशन एंड इंडियार जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमर्ज करुची इकोसिस्टम ता ऊपर हमें डिस्कस करबा नैनो रोबोट्स इसरो रो हेवीएस्ट लॉन्च जोटा कि ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 एंड राइज ऑफ इंडियाज हेवी लिफ्ट कैपेबिलिटी कल्चर एंड हिस्ट्री रे इंडियार मिनिएचर पेंटिंग आछी सोमनाथ टेम्पल ऊपर न्यूज अछि श्रीमंत शंकर देव सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस रे अर्बनाइजेशन बियॉन्ड मेगा सिटीज बाल विवाह मुक्त भारत अभियान ट्रांसजेंडर वेलफेयर एसिड अटैक्स रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस रे ईपीआई एफटीए जो राइज होची राइजिंग एफटीए ट्रेड डिफिसिट जो राइज होची ता ऊपर देखिबा देन आरएनआई रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स सेंसस स्किल असेसमेंट सर्वे हैला ग्लोबल डोपिंग वायलेशंस डीनोटिफाइड ट्राइब्स इन्यूमरेशन इन सेंसस इंडिया रो एलएफपीआर माने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हिट्स रिकॉर्ड हाई अवार्ड्स एंड ऑनर्स रे कर्नाटक रा स्टेट फिल्म अवार्ड कलिंग लिटरेरी अवार्ड बदलता भारत मेरा अनुभव अतिथि विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार देन अस्त्रम आउ स्कॉच अवार्ड प्रोजेक्ट अस्त्रम विन्स स्कॉच अवार्ड असम पुलिस शिशु मित्र कैंपेन अवार्ड्स कर्नाटका बैंक सी आईबीए बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड जीति 26 नेशनल यूथ पार्लियामेंट कंपटीशन D4 काउंटर ड्रोन एंड धराशक्ति ईडब्ल्यू सिस्टम्स विन स्कॉच अवार्ड ऊपर बहुत न्यूज अच्छी इंपोर्टेंट हेइतिबो सेटा पद्मा अवार्ड्स एठी हमें देखिबा पद्मश्री पद्मभूषण एंड ऑल देन पद्मा अवार्ड्स गला 77th रिपब्लिक डे रे गैलेंट्री अवार्ड मिलची सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इंदिरा गांधी प्राइज जीवन रक्षा पदक वीर गाथा सुखात्मे नेशनल अवार्ड सी डॉट विन्स स्कॉच अवार्ड लेफ्टिनेंट के एम सुधा विन्स एनसीसी गोल्ड तमिलनाडु लॉन्चेस सेमोजी इलाकिया विरुधु देन इलाया राजा टू रिसीव पद्मपाणि अवार्ड नेशनल अवार्ड देन रिपब्लिक डे परेड रे बेस्ट कंटिंजेंट एंड टैब्लॉग आम देखिया सेल ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन ताकू मिली विंग इंडिया देन आमर रहिबो कोबिटियर को ऊपर गोटे न्यूज टाइलर प्राइज मिली गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स क्रिटिक चॉइस अवार्ड इटली ऑनर श्रीनिवास डेम्पो नलिनी जोशी तांकू एनएसडब्ल्यू साइंटिस्ट ऑफ द ईयर भाबरे घोषणा करा जाइछि ऑस्कर्स देन यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो एनएचएआई ओके स्पोर्ट्स रे खेलो इंडिया कर्नाटक खेलो इंडिया बीच गेम्स को टॉप करिछि देन वुमेन हॉकी इंडिया रो जो वुमेन हॉकी रही एशिया कप ता ऊपर न्यूज अछि आईटीबीपी विन्स 5th लद्दाख गोरखा कप आइस हनी चैंपियनशिप आईसीसी इजेक्ट्स बांग्लादेश फ्रॉम मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 उस्मान ख्वाजा सी रिटायरमेंट अनाउंस कले तांकर देखिबा ये किए एंड स्टीव स्मिथ से 37 टेस्ट सेंचुरी तांकर रिकॉर्ड से करछंती आपण माने टे कंटेंट सेमती गो थ्रू टे करनेबे ठीक अछि मु जेति कि हबा डिस्कस कली सो एई सब पिलर्स अंडर रे आमे आज रो करंट अफेयर्स कवर करिवा तापरे लास्ट रे आपनकर क्वेश्चंस रहइबो एंड किछि फैक्ट्स रहउची जोडा को डिस्कस हबो प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट ओके तो फर्स्ट आमे देखिबा फाउंडेशन डे ऑफ लोकपाल इन इंडिया 16 जनवरी 16 जनवरी रे एटा ऑब्जर्व हेतिला
जोटा कि एनफोर्समेंट कहार लोकपाल एंड लोकयुक्तास एक्ट ऑफ 2013 एनफोर्समेंट ऑफ व्हाट एनफोर्समेंट ऑफ इट्स सेक्शन 3 एक्ट 2014 रे आसीथिला फोर्स को एंड तार इवोल्यूशन देखिया को गले जो आइडिया थिला कि गोटे लोकपाल हो तो सेटा फर्स्ट आसला 1963 रे इंस्पायर्ड बाय द अम्बर्समैन मॉडल फर्स्ट जो एआरसी कमिशन थिला एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमिशन जको हम एआरसी भी कही था 1966 रे सिया को रेकमेंड करथिले कि गोटे इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो जे कि करप्शन आउ माल एडमिनिस्ट्रेशन संगे डील करिवो एंड इंडिया सेमती भी 2011 रे यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन यूएन सीएसई रेटिफाई करि सारची सो ए जो एंटी करप्शन बॉडी गोटे करा जाऊ स्टैट्यूटरी एंटी करप्शन बॉडी से ए जो प्रस्तावटा दिया जाइतला सेटा को आहुरी स्ट्रेंथेन कला देन लोकपाल एंड लोकयुक्तास एक्ट 2013 रे एनाक्ट हैला आउ बहुत गुडे एमिति स्टेट अछंदी से माने कोन कले ना पैरेलली लोकयुक्तास भी क्रिएट कले महाराष्ट्र 1971 रे सी फर्स्ट स्टेट थिला दिस इज वेरी इंपोर्टेंट कि से फर्स्ट स्टेट थिला किए थिला महाराष्ट्र जे कि गोटे लोकयुक्ता क्रिएट करिथिला दिस इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर प्रिलिम्स तो मुझे गोटे जिन कही दूची कि आपण केमिति रिवाइज करि परिबे जदि गोटे न्यूज अछि तार कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट खाली टिके हल्का आपणकर आइडिया थिबा दरकार व्हाट इज इंपोर्टेंट जो टू क्वेश्चन फ्रेम हबो इवोल्यूशन एंड बैकग्राउंड आ तार जदि किछि गोटे फैक्चुअल डेटा किछि देइछि जेमति कि बॉक्स फॉर्मेट रे हैला कि देखिले जानि जिबे हैला तो एगुडी को होछि ना प्रिलिम्स पई इंपोर्टेंट सो दिस इज इंपोर्टेंट फॉर प्रिलिम्स दिस इज इंपोर्टेंट फॉर प्रिलिम्स ठीक अच्छे कहीं पचार दब कि केतेटा मेंबर अच्छा तो ये आप जानवे कि गोटे चेयरमैन चेयरपर्सन रउ अप टू 8 मेंबर्स रे 8 मेंबर्स रो अधिक रही पारे ताठू कम रही पारे एटलिस्ट 50% मस्ट बी जुडिशियल मेंबर्स ठीक अच्छे 50% रिप्रेजेंटेशन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वुमेन ठारू आसीबे एंड एमाने कहा द्वारा अपॉइंट हेबे प्रेसिडेंट को द्वारा अपॉइंट हेबे एंड प्रेसिडेंट मन इच्छा तो क्या अपॉइंट करि परिबेनी सेति पई कि गोटे सिलेक्शन कमिटी तार सी कौन करेंगे रेकमेंड करेंगे एंड ये सिलेक्शन कमिटी रे किए किए रहिबे प्राइम मिनिस्टर स्पीकर ऑफ लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आउ जने एमिनेंट जुरिस्ट माने 5 जन रहउचंदी सिलेक्शन कमिटी रे आंको रेकमेंडेशन हिसाब रे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन करेंगे अपॉइंट करेंगे एलिजिबिलिटी हो गला एंड टेन्यूर आंकर केते रहइबो 5 वर्ष से माने सर्व करिवे टिल 70 इयर्स ऑफ एज एलिजिबिलिटी होची चेयरपर्सन सी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थिबे नहले सुप्रीम कोर्ट जने जज थिबे जुडिशियल मेंबर माने जो रहले जोटा 50% से माने रहिबे से माने सुप्रीम कोर्ट रा जजेस थिबे फॉर्मर और सर्विंग एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स थिबे नॉन जुडिशियल मेंबर माने जो रहिले तांको पाखरे 25 वर्ष रा एक्सपीरियंस मिनिमम थिबा दरकार ठीक अछि एंड जुरिस्डिक्शन तांकर कोन मुझे कही कही जीवी तो से हिसाब से आप आइडिया लगे जिते मैगजीन डाउनलोड करके रिवाइज करेंगे कि जेकोसी आप करंट अफेयर्स रिवाइज करूँ कि न्यूज जहाँ भी रही कि प्रिलिम्स आउ मेन्स को कोटा प्रिलिम्स पाई की इंपोर्टेंट कोटा मेन्स पाई की इंपोर्टेंट जुरिस्डिक्शन होची कि ये प्राइम मिनिस्टर्स को कवर करुची विथ सेफगार्ड एंड एक्सक्लूजन्स रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी फॉरेन रिलेशंस एटॉमिक एनर्जी स्पेस एंड पब्लिक ऑर्डर जो करप्शन और माल एडमिनिस्ट्रेशन से कवर करेंगे से जो डील करेंगे ता अंडर किए किए आसुचंदी एथरे प्राइम मिनिस्टर जिबे यूनियन मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ग्रुप ए रु डी जिते भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अछंती ए बी सी डी जिते सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल अछंती से मानको को समस्तकर करप्शन और माल एडमिनिस्ट्रेशन संगे से माने आसीबे तार जुरिस्डिक्शन नेट अंडर रे ओके एक्सटेंड्स टू एंटिटीज रिसीविंग सब्सटैंशियल गवर्नमेंट फंडिंग पावर कौन तांकर एक्सरसाइजेस सुपरिंटेंडेंस ओवर सीबीआई इन्वेस्टिगेशंस इन केस रेफर्ड बाय इट एंड से गोटे सिविल कोर्ट हिसाब रे ताकू पावर दिया जायछि से सर्च और सीजर करि परिबे प्रोसिक्यूशन और डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं परिबे एंड सीवीसी आमर जो सेंट्रल विजिलेंस कमिशन रही ताकू डायरेक्शन से माने इशू करि परिबे से माने ताकू इंस्ट्रक्ट करि परिबे एम्पावर टू सजेस्ट सिस्टमिक एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स जो कंप्लेंट्स गुड़िक किए फाइल करि परिबो कंप्लेंट्स कैन बी फाइल्ड बाय एबे तांकर जो धर कोठी करप्शन चली कि कहा अगेंस्ट धर कंप्लेन करियार अछि से कंप्लेन किए फाइल करिवो इंडिविजुअल माने फाइल करि परिबे माने आपण भलिया मो भलिया लोक माने फाइल करि परिबे एनजीओ करि परिबे कंपनी ट्रस्ट एलएलपीज
फॉरेन नेशनल्स भी जदि तांकर किसी वैलिड आइडेंटिफिकेशन थी से माने भी फाइल करि परिबे ठीक अछि तो जदि एमती क्वेश्चन रे थिबो कि केवल इंडियन माने फाइल करि परिबे नाही फॉरेन नेशनल्स भी फाइल करि परिबे तांक पाखरे वैलिड आइडेंटिफिकेशन थिबा दरकार आउ एटारे वाइड एक्सेस रही एठी देखि परथिबे केते सारा सेक्शंस फाइल करि परिबे इंस्टीट्यूशनल इंपोर्टेंस बस एठी आसीगला मेंस तार इंपोर्टेंस कौन देन एडवांटेज कौन डिसएडवांटेज कौन वे फॉरवर्ड कौन ए सब होची आपनकर मेंस पाई की बहुत इंपोर्टेंट बट ओवरऑल सब किछि पढ़िबा इंपोर्टेंट कि ताकि आपण गोटे you can brainstorm and improve analytical ability ठीक अछि concerns and limitation एटी आसीगला देखिबे एटी conclusion आसीगला सो concerns and limitations रे appointment और operationalization रे डिले होची ओवर डिपेंडेंस रही ऑन एक्जिस्टिंग इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ओवरलैप करूची मैंडेट जमी सीबीसी और सीबीआई आम डिस्कस कले पब्लिक अवेयरनेस एबे भी लिमिटेड अच्छी सो सिटीजन एंगेजमेंट इतरे रेस्ट्रिक्ट होगी अच्छी ऑलरेडी कनक्लूजन हो कि जो फाउंडेशन डे रहा से लोकपाल गोटे रोल को हाईलाइट करी एज की पिलर ऑफ इंडियाज एंटी करप्शन फ्रेमवर्क एटा गोटे ट्रू इंपैक्ट जोटा कि ओनली इंडिविजुअल केस ऊपर लाई करेनी बट सिस्टमिक इंटीग्रिटी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को भी प्रमोट करे इन व्हाट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूथनासिया डिबेट इन इंडिया यूथनासिया कौन एठी आमे पढ़िबा आमे जानिबा कि यूथनासिया बे न्यूज रे कोन पई अछि कि सुप्रीम कोर्ट कहिला से हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को सुप्रीम कोर्ट हियर करूची 2025 जे पिटिशनर अछंती ही हैज बीन बेड रिडन फॉर ओवर 13 वर्ष हे गला तांकर कोनोसी हेल्थ रे इंप्रूवमेंट देखा जायनी हैज बीन बेड रिडन विथ 100% क्वाड्रिप्लेजिक डिसेबिलिटी तांको अछि सो जो पिटिशनर अछंती जो प्ली एटा सीक करा जाउची परमिशन फॉर पैसिव यूथनासिया थ्रू विड्रॉल ऑफ लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट ठीक अछि जोटा कि गोटे एबे डिग्निटी ऑटोनॉमी एंड एंड ऑफ लाइफ केयर उपरे गोटे डिबेट अराइज करिछि यूथनासिया होची इच्छा मृत्यु कहंती ताकू टू द डेलिबरेट हेस्टनिंग ऑफ डेथ to relieve suffering from terminal or irreversible condition active euthanasia और passive euthanasia कोन ए दिटा डिफरेंट अछि active euthanasia होची जे कि डायरेक्ट एक्शन धर से जो बेड रिडन हेचंती तांकर तो ऑब्वियसली कहीं ना जेहेतु तांकर कंडीशन टा इरिवर्सिबल अच्छी से केबे भल हो पारिबेनी तो तांकर जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जहाँ भी वेंटिलेटर्स वगैरह सब लगी आई डोंट नो दैट टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ इट किंतु सेगुड़ी सब विड्रॉ करनबा ठीक अच्छे किंतु एक्टिव यूथनासिया रे कौन हुए कि जदि से किसी गोटे लिथल इंजेक्शन दिगला कि तुम तम आड़ू कराउच डेथ को इंड्यूस कराउच इट इनवॉल्व्स द डायरेक्ट एक्शन टू कॉज डेथ फॉर एग्जांपल लेथल इंजेक्शन एटा इंडिया रे एक्टिव यूथनासिया चले नहीं एटा मने रखिबो क्वेश्चन आसी पारे ट्रीटेड एज कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर एटा को हमें मर्डर हिसाब रे देखिता अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 पैसिव यूथनासिया कोन मु जो कहिली कि ताकर जो लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट थिबो ताको से माने बंद कर देबे बा विथड्रॉ कर देबे तो सेटा डेथ कोन से माने अलाउ करिवे कि सेटा नेचुरली आसु परमिटेड इन इंडिया जुडिशियल इवोल्यूशन देखिबा यूथनासिया हिसाब रे सुप्रीम कोर्ट कहिसंती एटा को अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ कि केवल बंचिबा इंपोर्टेंट नुह डिग्निटी एंड द प्रोसेस ऑफ डाइंग विथ डिग्निटी इज इंपोर्टेंट 2018 गाइडलाइंस कॉमन कॉज जजमेंट रे आसिला इट रिकॉग्नाइज द पैसिव यूथनासिया एंड लिविंग विल्स रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ टू मेडिकल बोर्ड दीटा मेडिकल बोर्ड अप्रूवल दरकार जो बोर्ड रे डॉक्टर्स मानकर मिनिमम 20 वर्ष एक्सपीरियंस थिबो 2023 रे मॉडिफिकेशन आसिला कि ए जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट को 5 वर्ष कर दिया जाइछि एंड गोटे 48 आवर टाइम लिमिट दिया जिवो फॉर मेडिकल ओपिनियंस एंड सिंप्लीफाइड द स्ट्रक्चर टू 2 बोर्ड्स विथ 3 मेंबर्स ईच ओके easing the procedural rigidity. These changes reflect a shift from excessive caution to patient centric pragmatism. Ethical और constitutional debate एबे थितरे कोन चलची आ ऊपरी ethics रे question बनिबो and GS4 I mean
एंड यूथेनासिया को जीएस4 रे बाकी जो डिग्निटी हैला राइट टू लाइफ हैला जदि एमती किसी जनरलाइज्ड क्वेश्चन भी थिबो ना तो यूथेनासिया को सेतरे इंक्लूड भी करि हबो आई मीन एथिक्स हैला मोरालिटी हैला एंड ऑल ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी तो एथिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट की ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी हैम्पर होची पर्सनल ऑटोनॉमी और डिग्निफाइड एक्जिस्टेंस राइट टू रिफ्यूज भी कहीं ना जेहेतु तांकर बॉडीली इंटीग्रिटी माने से माने किसी फंक्शन करि पारु ना तो से माने तांकर कंसेंट देई परिबेनी सो द राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट इज सीन एज इंट्रिंसिक टू बॉडीली इंटीग्रिटी सैंक्टिटी ऑफ लाइफ एतरे हैम्पर होची एटा गोटे हिपोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड एटा होची मोरल ड्यूटी समस्तंकर टू प्रिजर्व लाइफ प्रैक्टिकल कंसर्न रे मेंटल कॉम्पिटेंस मिसयूज कोर्सन आउ स्लिपरी स्लोप एक्सपांशन भी मेडिकल जजमेंट रे चलची सो ए सब जिनस को लेकिन गोटे डिबेट अराइज होची ग्लोबल और लीगल पोजिशनिंग आम देखिए गले यूथेनेसिया एंड फिजिशियन असिस्टेड सुसाइड assisted suicide only स्विट्जरलैंड रे चले पैसिव यूथेनेसिया रिफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट ओके स्वीडन फ्रांस इटली जे कि रिफ्यूजल को अलाउ करंती ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया रो अप्रोच रिमेन एटा रेस्ट्रिक्टिव रही एंड डिग्निटी ओरिएंटेड रही एंकर्ड इन जुडिशियल ओवरसाइट स्ट्रेंथनिंग इंडियाज एंड टू लाइफ केयर फ्रेमवर्क स्ट्रेंथन करा जिबा दरकार ए सब जो कंफ्यूजन रही जहाँ बेस रे डिबेट्स अराइज होची सो लेजिस्लेटिव क्लैरिटी गोटे थिबा दरकार कि लॉज को कोडिफाई करा जाउथिबा दरकार सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस ऑन पैसिव यूथेनेसिया एंड लिविंग विल्स लीगल प्रोटेक्शन दिया जाउथिबा दरकार टू मेडिकल प्रैक्टिशनर्स प्रोसीजरल स्ट्रीमलाइनिंग decentralize the approvals to district and hospital ethics committee living wills into national health digital record universal palliative care जो होम बेस्ड कम्युनिटी बेस्ड और हॉस्पिटल बेस्ड पैलिएटिव सर्विसेज अच्छी अंडर आयुष्मान भारत को एक्सपैंड करा जाऊ ट्रेन फ्रंटलाइन वर्कर्स यूजिंग द आशा वर्कर्स इंक्लूडिंग आशा वर्कर्स रॉबस्ट सेफगार्ड्स थिबा दरकार जेमती कि साइकेट्रिक और सोशल असेसमेंट मैंडेटरी थिबा दरकार पब्लिक अवेयरनेस थिबा दरकार कंक्लूजन होची कि जो जुडिशियल ट्राजेक्टरी रही इथेनासिया सी गोटे ग्रेजुअल रिकॉग्निशन को शो करूची दैट द राइट टू डाई विथ डिग्निटी इज इनसेपरेबल फ्रॉम द राइट टू लाइफ विथ लिव विथ डिग्निटी ओके राइट टू डाई विथ डिग्निटी ताकू सेपरेट करा जाई परिवन है फ्रॉम द राइट टू लिव विथ डिग्निटी सो जो इंडिया रो जुरिस्प्रुडेंस रही से केयरफुली इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड सोशल एंड एथिकल सेफगार्ड्स को बैलेंस करूचंती लेजिस्लेटिव बैकिंग एक्सेसिबल पैलिएटिव केयर और एथिकल विजिलेंस एथिपाई कि निहाती दरकार डब्ल्यूईएफ रो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आसी जाइछि डब्ल्यूईएफ होची वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जहार से रिलीज करछि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जे कि आइडेंटिफाई करछि साइबर सिक्योरिटी एज द बिगेस्ट रिस्क फॉर इंडिया इन 2026 तो 2026 आउटलुक रे हमें देखिबा कि जो जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन अछि इट हैज बिकम द मोस्ट सिवियर ग्लोबल रिस्क इन द इमीडिएट टर्म ओके एंड एथिरे जो स्ट्रेटेजिक यूज होची ट्रेड रेस्ट्रिक्शन सैंक्शन इन्वेस्टमेंट कंट्रोल एंड टेक्नोलॉजी बैन टू एडवांस द जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड ये जो ट्रेंड टा रही ये मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को वीक करूची आ प्रोटेक्शनिज्म को फ्यूएल करूची एंड फ्रैगमेंट्स ग्लोबल सप्लाई चेन्स स्टेट बेस्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ताकू सेकेंड रैंक मिली थ्रेट हिसाब रे जे कि persistence of regional war and their spillover effect on energy trade and migration को शो करूची climate related risk रही technology risks सी भी sharply rise करूची misinformation और disinformation rank among the top global risks adverse outcomes of artificial intelligence भी ए रिपोर्ट थ्रू रू शो करा जाइची साइबर सिक्योरिटी को टॉप ग्लोबल रिस्क हिसाब रे रैंक करा जाइची अंडरस्कोरिंग इट्स ग्रोइंग डिजिटल वल्नरेबिलिटी एज इकोनॉमीज एंड गवर्नेंस सिस्टम्स बिकम इंक्रीजिंगली डिजिटाइज जेमती जेमती इकोनॉमीज कंट्रीज गवर्नेंस सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ये सब डिजिटाइज हे चलची तो साइबर सिक्योरिटी ए टाइम रे टॉप ग्लोबल रिस्क हिसाब रे प्रूव होइची लॉन्ग टर्म आउटलुक नेक्स्ट डिकेड हिसाब रे क्लाइमेट रिस्क डोमिनेट करूची इंडिया स्पेसिफिक रिस्क आउटलुक रे देखिबा साइबर सिक्योरिटी टॉप रे अछि 2026 इंडिया रे एंड इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी रही अदर मेजर रिस्क इंडिया रे जेमती कि पब्लिक सर्विसेज इनसफिशिएंट अछि सोशल प्रोटेक्शन इकोनॉमिक डाउनटर्न एंड स्टेट बेस्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट भी रही जेमती कि हमर टेररिज्म हैला प्रॉक्सी वॉर्स रीजनल इनस्टेबिलिटी ए सब भी चली रही सो एगुडी को भी शो करा जाइछि India's risk profile shows a stronger emphasis on societal and governance related vulnerabilities. Cybersecurity as a systemic national risk for India.
इंडिया रे एबे 369 मिलियन मालवेयर डिटेक्शन 2025 रे ही करा जाइछि एंड एटा ताठारु आहुरी अधिक जोटा कि गोटे परसिस्टेंट एक्सपोजर शो करूछि टू साइबर थ्रेट्स सो एथिरे कोन जहाँ भी मालवेयर डिटेक्ट करा जाइछि सेते डोमिनेट करूछन्ती ए दीटा ट्रोजन्स एंड इन्फेक्टर्स रैपिड डिजिटल एक्सपेंशन एबे चली गवर्नेंस हो एडमिनिस्ट्रेशन रे हो तो एबे सब जिनस डिजिटाइज होची तो एटा साइबर रेजिलियंस को आउटपेस ऑलरेडी करि सारची तो एथिरे इलेक्शन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पावर ग्रिड और पब्लिक ट्रस्ट रे रिस्क देखा जाइछि स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटीज रादर देन आइसोलेटेड आईटी फेलियर्स inequality and weak public capacity as risk multipliers already risk तो रही and ता सांगरे से रिस्क को आहुरी मल्टीप्लाई किए करूची जो इनइक्वालिटी ऑलरेडी परसिस्ट करूची एंड वीक पब्लिक कैपेसिटी पब्लिक मानक पाखरे सेतिकी कैपेसिटी नाही ए सबु ए शॉक को से माने अब्सॉर्ब करि परिबे जियो इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिस्क इंडिया इंटीग्रेशन विथ ग्लोबल ट्रेड एनर्जी कहना ग्लोबलाइजेशन रो जमाना एक्सपोजेस टू जियो इकोनॉमिक शॉक्स रीजनल इंस्टेबिलिटी प्रोलॉन्ग आउ ये जो इंस्टेबिलिटी प्रोलॉन्ग ही चलची एटा आहुरी से जो हाइब्रिड थ्रेट को बढ़ाउची स्टेप्स टू रिड्यूस इंडियाज वल्नरेबिलिटी इंडिया रो वल्नरेबिलिटी को केमिति रिड्यूस करा जाय परबो इकोनॉमिक रेजिलियंस को स्ट्रेंथन करिकि जो सप्लाई चेन रहिला ताको रिड्यूस ता ऊपर डिपेंडेंस को रिड्यूस करा जाऊ थ्रू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन मैक्रो इकोनॉमिक बफर्स को मेंटेन करा जाऊ वाया फॉरेक्स रिजर्व्स एंड काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी इनइक्वालिटी को ट्रीट करा जाऊ कैपेसिटी बिल्ड करा जाऊ जो माने कि ऑलरेडी पुण से थ्रेट को मल्टीप्लाई करूचंती अगेंस्ट द हाइब्रिड थ्रेट्स तांकर ट्रेनिंग करा जाऊ कैपेसिटी बिल्डिंग करा जाऊ लोक मानकर एंड इंफॉर्मेशन इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करा जाऊ embedding climate resilience in development this is also important इंडिया रो मैरिटाइम स्ट्रेटजी आमे देखिबा इंडिया रो गोटे इवॉल्विंग मैरिटाइम स्ट्रेटजी रहिछि जोटा कि एबे रिन्यूड एनालिटिकल डेप्थ गेन करिछि थ्रू इनसाइट्स फ्रॉम द राउटलेज हैंडबुक ऑफ मैरिटाइम इंडिया which traces India's shift from largely land-centric security outlook to comprehensive Indo-Pacific oriented maritime vision. Strategic geography early maritime orientation कौन इंडिया रो जो geography रहिला तार dual imperative रहिछि गोटे हिमालयस जे कि continental security को शेप करती एंड इंडिया रो ओशन जे कि मैरिटाइम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे हिस्टोरिकली जेतेबेले फॉरेनर्स आसुथिले इन्वेड करुथिले इंडिया को इट लार्जली ऑकर्ड वाया द लैंड रूट्स एंड इंडिया projected power seaward through trade navigation culture and religion ancient और medieval time रे कोन होतला जो network establish करा जायतला indian ocean रे as a space of connectivity and prosperity and a legacy छड़ा भी maritime concern सी गोटे secondary हे कि रहि जायछि in modern strategic thinking even though the leaders like जवाहरलाल नेहरू से warn करिथिले कि excuse me कि इंडियन ओशन को कंट्रोल करा जाओ एंड इट वाज वेरी वाइटल फॉर ट्रेड एंड इंडिपेंडेंस कॉलोनियल डिसरप्शन एंड अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल थिला सबऑर्डिनेटेड इंडियाज मैरिटाइम पावर टू इंपेरियल तांकर इंटरेस्ट पई कि आउ इंडिजिनियस नेवल ट्रेडिशन पई डिसमेंटल से कर देथिले आउ इंडिपेंडेंस परे कोन हैला इंडिया कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी माइंडसेट इनहेरिट कला and maritime strategy it remained as under prioritized sebetharu maritime strategy को under एतटा पे prioritize priority मिलिनी as resource and attention सब बेले territorial defense और internal security ऊपर फोकस करा जायछि maritime reorientation since 1980s एटा गला post independence phase early post independence तापर हमें 1980s रे देखबा mid 1980s रे कोन हैला ए जो dependence बढ़िला on trade and energy import seaborne trade and energy import so जोटा कि गोटे स्ट्रेटेजिक रीओरिएंटेशन को ट्रिगर कला एटा गोटे नीड फॉर्म हैला कि आकु मॉडर्नाइज करा जाऊ एंड ताकु रीओरिएंट करा जाऊ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंटीग्रेटेड इंडिया इनटू ग्लोबल मैरिटाइम सप्लाई चेन्स रिफ्रेमिंग सीज एज स्ट्रेटेजिक हाईवेज तापरे स्ट्रेटेजिक हाईवे हिसाब रे आकु देखिले सीज को रादर देन पेरिफेरल बफर्स and early 2000s रे
आंटी पायरेसी ऑपरेशंस हैला, नेवल डिप्लॉयमेंट्स को एक्सटेंड करा गला जोटा कि इंडिया को गोटे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हिसाब रे एस्टाब्लिश कला। सिविलाइजेशनल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशंस रे हमें देखिबा कि चोलास जो को नॉटिकल टाइगर्स भी कुआ जाउतला एंड लेटर मराठा से माने सब बेले नेवल पावर ओवरसी एक्सपेडिशन एंड मैरिटाइम स्टेटक्राफ्ट को ऑर्गेनाइज तांकर रखिथिले। सो कंटेम्पररी मैरिटाइम स्ट्रेटजी रे हमें देखिबा कि इंडिया रो जो मैरिटाइम स्ट्रेटजी रहला सेतरे सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी और इकोलॉजिकल डायमेंशन को भी इंटीग्रेट करा जायछि। एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी उपरे एम्फसाइज दिया जाउची, कैपेसिटी बिल्डिंग करा जाउची नेबरिंग स्टेट्स रे एंड जो ब्लू इकोनॉमी रहिला जो अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस, मैरिटाइम टेक्नोलॉजी, कोस्टल सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस ए सब ऊपर भी फोकस करा जाउची। लीगल एंड रेगुलेटरी मॉडर्नाइजेशन रे इंडिया जो कॉलोनियल एरा लॉज को रिप्लेस करिकी मॉडर्न लेजिस्लेशन जेमति कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट, कैरियज ऑफ गुड बाय सी एक्ट, इंडियन पोर्ट्स एक्ट ए सब लेजिस्लेट करिछि। एंड पॉलिसी विजन कोन, इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 एंड मैरिटाइम अमृत काल 2047 रो एम होछि कि एमिति इंडिया को ट्रांसफॉर्म करा जिवो इनटू अ ग्लोबल मैरिटाइम हब। एंड ए जो स्ट्रेटजी रहिला इट इज गाइडेड बाय दिस सागर जहा होछि जार फुल फॉर्म होछि सिक्योरिटी ऑफ ग्रोथ एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। एंड एटा को एक्सपांड करा जायछि थ्रू द महासागर विजन जोथरे कि मैरिटाइम सिक्योरिटी को इंटीग्रेट करा जाउछि विथ डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। फर्दर जो इंस्टीट्यूशनल प्रिपेयर्डनेस को स्ट्रेंथन करा जाउछि थ्रू इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव along with एशियन IORA, बिमस्टेक, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन। किंतु की चैलेंजेस की चाइना ग्रोइंग प्रेजेंस इज अ चैलेंज। डुअल यूज ऑफ पोर्ट्स, शिप बिल्डिंग कैपेसिटी रे एसिमेट्री अछि, माने यूनिफॉर्म नहीं सेटा डिफेंस इंडस्ट्रियल स्केल हैला, लॉजिस्टिक रीच हैला। मैरिटाइम गवर्नेंस एबे भी हमर फ्रजाइल है कि अछि एंड कैपेबिलिटी रे गैप रहिछि एंड इंडिजिनियस शिप बिल्डिंग रे डिले होछि, सबमरीन शॉर्टेज, डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी। सो क्लाइमेट ए सब जहाँ भी चैलेंजेस रही ताको आहुरी मल्टीप्लाई करूची क्लाइमेट चेंज। मेजर्स टू स्ट्रेंथन द इंडियाज मैरिटाइम स्ट्रेटजी, इंडिया मैरिटाइम स्ट्रेटजी को केमिति स्ट्रेंथन करियबो। गोटे कंसोलिडेटेड नेशनल मैरिटाइम सिक्योरिटी फ्रेमवर्क आनिकी डोमेन अवेयरनेस, अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस को ऑपरेशनलाइज करा जाऊ। देन असिस्टिंग इंडियन ओशन लिटरल्स इन डेवलपिंग UN क्लॉज कंप्लायंट मैरिटाइम गवर्नेंस, क्लाइमेट रेजिलियंस को इंटीग्रेट करा जाऊ इनटू मैरिटाइम सिक्योरिटी प्लानिंग, ह्यूमन कैपिटल रे इन्वेस्ट करा जाऊ। एज ऑफ कंसेंट ऑफ एडोलसेंट ऑटोनॉमी इन इंडिया। कॉन्टेक्स्ट होची स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस अनुरुद्ध एंड ANR 2026 रे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कहिसंदी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट पोक्सो एक्ट जो 2012 रो flagged the increasing use of this act in case of consensual adolescent relationship. ओके, मीनिंग ऑफ एज ऑफ कंसेंट अंडर इंडियन लॉ। एज ऑफ कंसेंट कौन? एज ऑफ कंसेंट होची लीगली प्रिस्क्राइब्ड एज द एज एट व्हिच ए पर्सन इज डीम्ड कैपेबल ऑफ कंसेंटिंग टू सेक्सुअल एक्टिविटी एंड एटा इंडिया रे रही 18 वर्ष अंडर द जेंडर न्यूट्रल पोक्सो एक्ट 2012। जे कोनोसी पर्सन 18 इयर्स बिलो सी ताकू गोटे छुआ हिसाब रे निया जिवो, गोटे चाइल्ड हिसाब रे निया जिवो एंड तार जो कंसेंट रही इट हैज नो लीगल वैलिडिटी। सेक्शन 19 ऑफ पोक्सो एटा मैंडेट करूची कि कंपलसरी रिपोर्टिंग इज इंपोर्टेंट फॉर सस्पेक्टेड ऑफेंसेस एंड लीगल ए जो 18 इयर्स जाए आमे आसिले तार लीगल एवोल्यूशन केमती फर्स्ट एटा 10 वर्ष थिला, तापरे 12 वर्ष करा गला। फर्स्ट 10 वर्ष थिला अंडर आईपीसी, तापरे 12 वर्ष करा गला ताको एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 हिसाब रे, देन 14, देन 16, 18 एमती करा जाय कि एबे हमरो 18 इयर्स चली छी। सो अंडर इट इज कंटिन्यूइंग अंडर द भारतीय न्याय संहिता। जुडिशियल व्यूज कौन अच्छी इन स्टेट वर्सेस हितेश 2025 रे से कहला कि कंसेंसुअल रोमांटिक रिलेशनशिप अमंग एडल्सेंट्स कि लॉ आको एक्नॉलेज करबा दरकार। कोर्ट एटा स्ट्रेस कला कि जो लीगल अप्रोच रही इट शुड इवॉल्व इन लाइन ऑफ सोशल रियलिटी एंड एडल्सेंट डेवलपमेंट। आ फेवर रे भी किछि आर्ग्युमेंट्स रही कि जो माने कि 16 रु 18 वर्ष एडोलसेंट्स रहिले से माने कॉग्निटिव मैच्योरिटी से माने ऑलरेडी शो करूछन ड्यू टू देयर एजुकेशन हैला कि डिजिटल एक्सपोजर कि तकर अवेयरनेस जो गुरु हैला। सो एटारे जो एम्पिरिकल एविडेंस हाइलाइट्स अ डिस्कनेक्ट बिटवीन लॉ एंड रियलिटी। सो से माने एटा को फेवर करूछन कि से माने ऑलरेडी मैच्योर, सो 16 टू 18 इयर्स, तो एटा को 18 इयर्स न करा जाऊ। देन मिसयूज होची पोक्सोरो, ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन
एटा जो प्रोवाइड करा जाउची एथिरे कोन होउची पोक्सो एक्ट को मिसयूज करूछन ट्राई करूछन कि एज ऑफ कंसेंट को लोअर करा जाउ 16 करा जाउ 18 अपेक्षा एंड सेक्सुअलिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस law enforcement to comprehensive a shift from punitive law enforcement to comprehensive sexual education and awareness is seen as more effective in promoting safe adolescent behavior. किंतु आर्ग्युमेंट एगेंस्ट कौन रही कि जदि एज को कमे दिया जाउची ताहाले सी जो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन ट्रैफिकिंग और कोअर्शन अगेंस्ट जहाँ भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती सेटा को वीक हो जिवो इन आशिक रामजी अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र रे में देखिथिले कि बॉम्बे हाई कोर्ट से एम्फसाइज करथिले जो सेक्सुअल ऑटोनॉमी रहिला इट इंक्लूड्स बोथ फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड द राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल एग्रेशन बोथ एसेंशियल टू ह्यूमन डिग्निटी मोहम्मद रफायत अली और स्टेट ऑफ दिल्ली ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଲିଟିର ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ 2 ମିନିଟ୍ ଶୁଣିବେ ମୋ କଥା ଯେତେବେଳେ ପଲିଟିର ନ୍ୟୁଜ୍ କଭର କରୁଥିବେ ଆଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ବି ଦେଖିଲେ ଏମିତି କେସେସର କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି କି ୟୁଜ୍ ହେଇପାରୁଛି ତାକୁ କ'ଣ କରୁଥିବେ ସବୁବେଳେ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିକି ରଖୁଥିବେ आंसर राइटिंग रे बहुत हेल्पफुल रहिबो reaffirm that under POCSO consent is irrelevant if the victim is below 18 okay manipulation fear dependency and law commission रिपोर्ट द 283rd रिपोर्ट 2023 रे भी से कहतला कि एज ऑफ कंसेंट जदि हमें लो कर दउचे ताहले चाइल्ड मैरिज प्रोस्टिट्यूशन ट्रैफिकिंग ए सब बढ़ी जिवो मेजर्स टू बैलेंस कि जहाँ भी चेंज करा जाउची एज ऑफ कंसेंट रे सेटा लेजिस्लेटिव हवा दरकार एंड कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन एडोलसेंट हेल्थ सर्विसेज जेंडर सेंसिटिव पॉलिसिंग फैमिली सपोर्ट सिस्टम लीगल रिफॉर्म्स ए सबु संगरे अलाइन होथिबा दरकार एंड 16 to 18 year old जो माने रहिले within a limited age gap they are subject to judicial scrutiny so गोटे possible model जे कि allow करूथिबा consensual relationship between this age group within a limited age gap subject to judicial scrutiny and गोटे empathetic framework follow हवा दरकार Department of Rural Development year end 2025 डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट से ताकर ईयर एंड 2025 रिलीज करछन्ती जे कि गोटे सब्सटेंशियल प्रोग्रेस हाईलाइट करूचे इन रूरल कनेक्टिविटी हाउसिंग हाउसहोल्ड लाइवलीहुड्स एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग एंड सोशल सिक्योरिटी ए सब पिलर ऊपर कहार केते कोन प्रोग्रेस हेची ए सब हाईलाइट होची रूरल कनेक्टिविटी एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिबा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रे 95% सैंक्शन रूरल रोड्स already heisarchi about 7.87 lakh kilometer already complete heisarchi since its inception in 2000 digital platform जेमती कि हमर आवास सॉफ्ट है आवास प्लस पहाड़ एंड द आधार बेस्ड ई केवाईसी से ए सब बेनिफिशियरी आको आहुरी इजी करि देछि प्रोसेस को जेमती कि बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन है ट्रांसपेरेंसी एंड मॉनिटरिंग ए सब इंप्रूव हे जाइछि स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट लिंकेजेस दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना से ऑलरेडी 82,000 अराउंड यूथ को ट्रेन कर सारी रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑलरेडी गोटे अच्छा खासा अमाउंट जमी 59 लाख रूरल यूथ को से ट्रेनिंग दे सारी अचीविंग 43 लाख सक्सेसफुल सेटलमेंट्स and ए सब मिसेक टुगेदर दीज इनिशिएटिव्स इंप्रूव द एम्प्लॉयबिलिटी एंटरप्रेन्योरशिप एंड द नॉन फार्म income diversification employment security and asset creation in मनरेगा से already 161.6 crore person days employment create कर सकते with 56.73% women participation स्ट्रक्चरल रिफॉर्म रे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट से गोटे पैराडाइम शिफ्ट हासिल करछन्ती इन रूरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी स्टैट्यूटरी एम्प्लॉयमेंट गारंटी 125 डेज को एक्सपैंड कर दिया जाइए ग्राम सभा लेड बॉटम अप प्लानिंग सेटा इंस्टीट्यूशनलाइज करा जाइए थ्रू द विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स दीज प्लान्स आर एग्रीगेटेड वाया द विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक एंड ये जो एक्ट रहिला से अलाइन करूची एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद द ड्यूरेबल्स एसेट क्रिएशन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर डिलीवरी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम operationalized Article 41 of the Constitution, supporting this much crore beneficiaries.
एंड जिते डिजिटाइजेशन बढ़ी आधार सीडिंग बढ़ी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स बढ़ी एंड सोशल सिक्योरिटी सपोर्ट भी एडिक्वेटली प्रोवाइड होजी गवर्नेंस कन्वर्जेंस एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रे हमें देखिबा जो दिशा रहिला दिशा प्लेटफॉर्म ताको स्ट्रेंथन करा जायछि से आहुरी लास्ट माइल जो गवर्नेंस ताको स्ट्रेंथन करछि इट इंटीग्रेटेड 100 स्कीम्स अक्रॉस द 35 मिनिस्ट्रीज नेशनल यूथ डे केबे मना जाए केबे ऑब्जर्व हुए 12 जनवरी रे commemorating the birth anniversary of Swami Vivekanand. 65% to be urdhva, over 65% of India's population see ebe below 35 years achi. So youth empowerment is central to achieving the Viksit Bharat 2047, making the day both commemorative and policy relevant. National Youth Day ro importance kono? Celebrates the ideals of character building, service discipline and nation building जोड़ा स्वामी विवेकानंद ऑलरेडी सिखे की जाइछन जोड़ा को से जो आइडियोलॉजी से आर्टिकुलेट ऑलरेडी करूथिले साकू सेलिब्रेट करिबाटा एंड ये रोल यूथ मानकर रोल को हिसाब रे देखंती एजेंट्स ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हिसाब रे सर्व्स एज पॉलिसी एंकर टू असेस द प्रोग्रेस ऑन एजुकेशन स्किलिंग हेल्थ एम्प्लॉयमेंट एंड सिविक एंगेजमेंट की गवर्नमेंट इनिशिएटिव कोन फॉर यूथ एम्पावरमेंट मेरा युवा भारत माई भारत एटा होची गोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर वॉलंटियरिंग लीडरशिप स्किलिंग एंड सिविक पार्टिसिपेशन आउ ये एआई एनेबल्ड कैरियर सर्विस को फिट इंडिया सहित इंटीग्रेट करे नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस एंड विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग एटा कोन एटा होची एनएसएस प्रमोट करे सिविक रिस्पांसिबिलिटी एंड सोशल सर्विस विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग इट एंगेजेस अराउंड youth leaders and digital outreach via my bharat and my government अग्निपथ स्कीम जो 4 वर्ष मिलिटरी सर्विस से माने प्रोवाइड करिवे ओके 17.5 रु 21 इयर्स तांगर एज हेइथिबा दरकार पीएम सेतु होची 1000 आईटीआईज को केमती अपग्रेड करा जिवो स्किल इंडिया मिशन समस्त जानिथिबे कि जे पीएम केवीवाई 4.0 पीएम नैप्स और जन शिक्षण संस्थान को इंटीग्रेट करिकी करा जायछि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रे 3.5 करोड़ जॉब दिया जाउची इन 2 इयर्स स्टार्टअप इंडिया पीएम मुद्रा योजना ये 1.97 लाख प्लस स्टार्टअप को सपोर्ट करूची मुद्रा लोन रे अप टू 20 लाख रो लोन दिया जाउची फिट इंडिया मूवमेंट रे डेली फिटनेस और प्रिवेंटिव हेल्थ ऊपर फोकस करा जाउची यूथ स्पिरिचुअल समिट एंड काशी डिक्लेरेशन रे मेंटल वेलबीइंग फ्री लिविंग वैल्यू बेस्ड लीडरशिप ए सब ऊपर फोकस करा जाउची एंड नशा मुक्त युवा गोटे एडवांसेस द विजन ऑफ नशा मुक्त युवा फॉर अ रेजिलिएंट सोसाइटी राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम एटा होची गोटे कॉम्प्रिहेंसिव एडोलसेंट हेल्थ प्रोग्राम जो थरे की न्यूट्रिशन मेंटल हेल्थ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सब्सटेंस मिसयूज एनसीडीज इंजरी प्रिवेंशन ए सब कवर करा जाए स्वामी विवेकानंद आइडियाज कौन थिले सी एठी तांकर डिटेल्स दिया जायछि ही वाज बोर्न एज नरेंद्रनाथ दत्ता ऑन 12 जनवरी 1863 तांकर नाम विवेकानंद फर्स्ट नथला 1893 रे ही अडॉप्टेड दिस नेम एंड से वेदांत और योगा को ग्लोबलाइज करथिले न्यू वेदांत पई एडवोकेट करथिले से स्पिरिचुअलिटी को मटेरियल प्रोग्रेस संगे ब्लेंड करबा को ट्राई करथिले मैन मेकिंग एजुकेशन ऊपर से एम्फसाइज दोउचिले कैरेक्टर बिल्डिंग एंड सर्विस जेमति की सर्विंग जीवा आज सर्वा शिवा को ऊपर तांकर एम्फसाइज रहितिला एंड सी आर्टिकुलेट करथिले तांकर जो व्यूज थिला जे कहूथिले कि चारोटी पाथ रहिछि टुवर्ड्स लिबरेशन गोटे होछि राजयोग कर्मयोग ज्ञान योग देन भक्ति योग रामकृष्ण मिशन को से फाउंड करथिले ही वाज अ फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन 1897 रे कंटेम्पररी चैलेंजेस यूथ मानकर पई एबे एटा रहिछि कि स्किल और जॉब रे मिसमैच रहिछि ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन मेंटल हेल्थ देन क्वालिटी एजुकेशन हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट ताको मिली पारुनी नीति आयोग ऑन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया नीति आयोग गोटे इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया रिपोर्ट बाहर करछि जो थरे की गोटे रोड मैप आउटलाइन हेछि कि केमिति इंडिया को गोटे ग्लोबल हायर एजुकेशन हब हिसाब रे बना जिवो अलाइनिंग विथ द एनईपी एंड इंडिया एट द रेट 2047 Why internationalization of higher education matters in India? First होची ब्रेन ड्रेन इंडिया रे से माने एजुकेशन
पाइकी तापर से कौन कर जॉब कर बाहर कंट्री रे जाइकी सो फर्स्ट इज एड्रेसिंग द ब्रेन ड्रेन देन सेकेंड हूँ कि इकोनॉमिक और फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो को रिड्यूस केमती करा जिवो देन थर्ड हूँ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को एनहांस करवा जेमती कि बहुत गुड़े इंडियन स्टूडेंट्स से अच्छा से मैंने करंटली यूएस यूके और ऑस्ट्रेलिया रे से पाठ पढ़ुଛନ୍ତି सो दिस कंटिन्यूड आउटफ्लो इंडिया जो नॉलेज इकोनॉमी रहा इनोवेशन सिस्टम और रिच कैपेसिटी को रिड्यूस करुच्ची सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को से अट्रैक्ट कले और फैकल्टी को भी से अट्रैक्ट कले जब से निज कंट्री को आनी पारिबे आम कंट्री को आनी पारिबा ताहले सेटा हमर रिसर्च क्वालिटी ग्लोबल रैंकिंग एंड एकेडमिक रेपुटेशन को फर्दर बूस्ट करिवो बूस्टिंग रिसर्च कैपेसिटी एंड सॉफ्ट पावर एवं मु कहली जस्ट देन सपोर्टिंग द नेशनल डेवलपमेंट गोल्स एनईपी 2020 सांगरे केमिति ए जो इंटरनेशनलाइजेशन को अलाइन करा जिवो एंड ताको सपोर्ट करा जिवो टू दिस एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देन हाई स्किल्ड वर्कफोर्स केमती आमे गोटे बिल्ड करि परिबा की चैलेंजेस कोन रही कि स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड एबे भी लिमिटेड रही एते भी स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड जो माने कि बहुत मेटिकुलस स्टूडेंट्स अछंती से माने को प्रोवाइड करा जाउनी वीक ग्लोबल परसेप्शन एंड एजुकेशन क्वालिटी जो ग्लोबल क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आसे एशिया 2026 टॉप 50 ओके सेति कोनसी इंडियन यूनिवर्सिटी नाही जेतेबेले कि आम इंडिया रे एक्सीलेंट आईआईटीज आउ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी अच्छी रेगुलेटरी एंड वीजा बॉटलनेक्स कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट रही फॉरेन फैकल्टी को अट्रैक्ट करिबारे डिफिकल्टी रोची जेहेतु तांकर गोटे ग्लोबल बेटर रैंकिंग नहीं एकेडमिक एंड करिकुलम कॉन्स्टेंट्स रही जेमती कि लिमिटेड इंटरडिसिप्लिनरी एंड रिसर्च इंटेंसिव प्रोग्राम्स ग्लोबल ब्रांडिंग और आउटरीच भी एबे भी वीक अच्छी की रेकमेंडेशन नीति आयोग एठी रेकमेंड कौन करछि कि स्कॉलरशिप और फेलोशिप को बढ़ा जाऊ फंडिंग करा जाऊ रिसर्च को जेमती कि भारत विद्या कोष गोटे एस्टाब्लिश करा जाऊ गोटे 10 बिलियन यूएस डॉलर रो सोवरेन रिसर्च फंड क्रिएट करा जाऊ फंडिंग मॉडल कौन रहिबो 50% डायस्पोरा और फिलांथ्रोपी एंड 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रहिबो एकेडमी मोबिलिटी फ्रेमवर्क टैगोर फ्रेमवर्क लॉन्च करा जाऊ एंड इरास्मस प्लस माइनस स्टाइल एक्सचेंज मेकानिज्म लॉन्च करा जाऊ विथ एशियन ब्रिक्स एंड बिमस्टेक एंड अदर पार्टनर्स रेगुलेटरी आ जो वीजा रिफॉर्म सब रहिला ताको सिंगल विंडो सिस्टम रे करा जाऊ फास्ट ट्रैक करा जाऊ आ जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज माने रहिले फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस इन इंडिया तांको अलाउ करा जाऊ कि से माने इंडिया रे आसी कि तांकर कैंपस ओपन करि परिबे इंक्लूडिंग कैंपस विद इन कैंपस मॉडल रिफॉर्म इन रैंकिंग एंड क्वालिटी मैट्रिक्स जो एनआईआरएफ रो जो पैरामीटर्स रही तार जो क्वालिटी से जो रैंक दिए यूनिवर्सिटीज मानक जो क्वालिटी मैट्रिक्स रही पैरामीटर्स रही से आहुरी फर्दर अधिका पैरामीटर्स ऐड करा जाओ जेमती ग्लोबलाइजेशन आउटरीच इंक्लूसिविटी इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स ब्रांडिंग एंड एलुमनी एंगेजमेंट भारत की आन लॉन्च करा जाओ एलुमनाई एम्बेसडर नेटवर्क आन मीन्स दिस फॉर ग्लोबल आउटरीच एंड रेपुटेशन बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल एंड कल्चरल रेडीनेस को स्ट्रेंथन करा जाओ गुड गवर्नेंस डे केबे हमर सेलिब्रेट हुए 25 डिसेंबर रे टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी एंड ए जो दिनटा रहिला से तांकर जो अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी इंक्लूसिवनेस और एथिकल गवर्नेंस तांकर जो आइडियल्स थिला ताको चेरिश करा जाए मीनिंग ऑफ गुड गवर्नेंस कोन अकॉर्डिंग टू यूनेस्कैप गवर्नेंस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एटा ए डेफिनेशन डा मने रखिबे important for answer writing while good governance denotes the effective fair accountable exercise of power in the public interest ये गवर्नमेंट रो बियॉन्ड रे जाए टू इंक्लूड लेजिस्लेचर जुडिशियली सिविल सोसाइटी प्राइवेट सेक्टर मीडिया एंड सिटीजन्स सो एसेंस रे गवर्नेंस प्लस ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एंड रूल ऑफ लॉ ए सबु गुड गवर्नेंस रो फाउंडेशन कोर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन गुड गवर्नेंस रो जेमति कि पार्टिसिपेशन रूल ऑफ लॉ ट्रांसपेरेंसी रेस्पॉन्सिवनेस कंसेंसस ओरिएंटेशन इक्विटी और इंक्लूसिवनेस इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी अकाउंटेबिलिटी ए सब होची कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस आ सिग्निफिकेंस कौन कि पब्लिक ट्रस्ट से स्ट्रेंथन हुए ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट हुए इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट हुए इंटेग्रिटी प्रोबिटी फेयरनेस कंपैशन रिस्पांसिबिलिटी ए सब स्ट्रेंथन हुए एंड जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स रहिला सेटा के इंट्रोड्यूस करथिले डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस 25 डिसेंबर 2019 रे एटा इंट्रोड्यूस हेतिला एथिरे जो गवर्नेंस परफॉर्मेंस रहिला अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज यूजिंग द 10 सेक्टर्स एंड 58 इंडिकेटर्स ताको एक्सेस करा जाए स्टेट्स आर ग्रुप्ड
for fair comparison into group A, group B, northeast and hill states and UTs. जो top performance माने रहिले good governance index 2021 रे सेमान थिले गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश and Delhi, encouraging competitive federalism. इंडिया रो जो initiatives रहिछि to promote good governance सेतरे हमर कोन आसे हमर जत्ते भी डिजिटल और ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स लॉन्च हेछि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पई कि जेमति हमर आरटीआई हेला सिटीजन चार्टर्स हला परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग रे and administrative capacity building रे citizen centric governance जेमति कि माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइजेशन रे पंचायत एसएचजी कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन को जेमति डिसेंट्रलाइज करा जाउची एंड तांको एम्पावर करा जाउची इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जेमति कैग हेला इलेक्शन कमिशन हेला मेजर चैलेंज एबे भी कोन परसिस्ट करूची फर्स्ट की सोशल एंड इकोनॉमिक इनसिक्यूरिटी अच्छी पॉलिटिक्स रे क्रिमिनलाइजेशन चली जेमती कि पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेसी बिजनेस नेक्सस जोटा फॉर्म होची एटा पॉलिसी प्रायोरिटीज को डिस्टॉर्ट करूची इंस्टीट्यूशनल करप्शन पॉपुलिज्म जुडिशियल डिलेज वीक अकाउंटेबिलिटी मेकानिजम्स दिस आर द चैलेंजेस एंड मेजर्स कोन नबा दरकार सिटीजन पार्टिसिपेशन को डीप करा जिबा दरकार मोस्ट मार्जिनलाइज्ड को प्रायोरिटाइज करा जिबा दरकार रियलाइजिंग द सर्वोदय थ्रू अंत्योदय लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करा जाऊ सिंगल विंडो सिस्टम को फर्दर से बूस्ट करा जाऊ सो दैट प्रोसीजर गुड़ा सिंप्लीफाई हो पारिबो और स्ट्रीमलाइन हो पारिबो एथिकल गवर्नेंस को प्रमोट करा जाऊ जुडिशियल कैपेसिटी को एनहांस करा जाऊ गति शक्ति स्टाइल इंटीग्रेटेड अप्रोच को गोटे अप्लाई करा जाऊ अटल बिहारी वाजपेयी लेगेसी इन गुड गवर्नेंस championed connectivity led development through the NHDP and PMGSY initiated landmark reforms in telecom power and fiscal discipline human capital development को emphasize करूथिले and strategic autonomy भी UGC new rules against the caste discrimination promotion of equity regulations 2026 Supreme Court of India से गोटे interim stay एबे इश्यू कर देइछन्ती on the UGC University Grants Commission promotion of equity in higher education institution regulation 2026 उपरे so की प्रोविजंस कौन कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो चली एक्सपैंड द कवरेज ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लिसिटली इंक्लूडिंग एससी एसटी एंड ओबीसी देयर बाय करेक्टिंग अर्लियर ओमिशंस एंड ब्रॉडनिंग द लीगल प्रोटेक्शन एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो थे कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट अनफेयर ट्रीटमेंट भी कवर करा जाउची ऑन ग्राउंड सच एज कास्ट रिलीजन रेस जेंडर प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेबिलिटी स्पेशली से एक्ट जो कि इक्वालिटी को इम्पेयर करती एंड ह्यूमन डिग्निटी को वायलेट करती मैंडेटरी इक्वल अपॉर्चुनिटी एतरे दिया जिवो मैंडेटरी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स एतरे हबो इन एवरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट equity inclusion access etc equity committee भी form होबो under these EOCs chaired by the head of the institution reporting and compliance framework को robust करा जिवो responsibility को clear रखा जिवो of institutional heads national level monitoring committee गोटे होबो under UGC enforceable penalty भी enforce होबो for non compliance impact कोन कि constitutional values एथरे इरोड होची देन जो क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस माने रहिले restricted access to quality institutions as entrenched prejudice and unequal schooling outcomes limit ओके से माने गोटे क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जाई परना हंदी ड्यू टू द प्रेजुडिस एंड अनइक्वल स्कूलिंग आउटकम्स रहउची सी एससी एसटी ओबीसी कर रिप्रेजेंटेशन जो रही एलिट कॉलेज रे ताकू लिमिट करूची साइकोलॉजिकल एक्सक्लूजन तांकर करा जाउची एंड थोरट कमिटी जोटा हेतला 2017 रे 2007 रे सॉरी सी एटा हाइलाइट करथिले कि जो हॉस्टल और कैंपस स्पेस रे तांकू सेग्रीगेट करिके रखा जाउची अलगा करिके रखा जाउची इट इज क्रिएटिंग इनफॉर्मल घेटोस एंड सोशल आइसोलेशन ग्रीवेंस रिड्रेसल मेकानिज्म वीक अछि ड्रॉप आउट रेट हायर अछि से मानकर मध्य रे कंसर्न्स कोन बिहाइंड द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरिम स्टे फियर की ओवर रेगुलेशन और एक्सेसिव पेनल प्रोविजंस could disrupt the academic opportunity, autonomy and institutional harmony. Identity based fragmentation ର risk ରହିଛି. So measures कौन थिबा दरकार कि social audits हो then curriculum reforms
को inclusive करा जाऊ, incorporating the Dalit history, literature, social justice perspective across the disciplines, mentorship मिलू and peer support structures मिलू, sensitization programs, faculty sensitization programs, special recruitment drives to urgently fill the SC/ST faculty vacancies, enhancing the diversity and role model representation, strengthening the grievance redressal bodies with autonomy, confidentiality, and victim centric procedures. डेमोग्राफिक विंटर आउ इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड केमती नैरो होची चाइना एबे गोटे पॉपुलेशन डिक्लाइन से विटनेस करूची फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर जाको डेमोग्राफिक विंटर कहउचंती सो एटी की कॉन्सेप्ट है कि टोटल फर्टिलिटी रेट कहले हमें कौन बुझू कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन गोटे वुमन जे कि एक्सपेक्ट करि परिबो टू हैव ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव इयर्स माने 15 टू 49 एज भितरे बेस्ड ऑन करंट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी होची एटा होची गोटे टीएफआर ऑफ 2.1 at which गोटे generation it replaces itself without population growth or decline. इंडिया रो करंट डेमोग्राफिक सिनेरियो आमे देखिया गले टीएफआर डिक्लाइन करी 1.9 हे जाइची इट इज बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल आ रूरल इंडिया रो जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रहिची फर्स्ट टाइम रूरल इंडिया फर्स्ट टाइम रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी दर रीच करची व्हाइल अर्बन टीएफआर इज सिग्निफिकेंटली लोअर सो एटा इम्प्लाय एया करूची कि जो पॉपुलेशन रहिला पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फॉलोड बाय डिक्लाइन लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फॉलोड बाय डिक्लाइन प्रोजेक्टेड अराउंड 2060 टू 2070 रीजनल वेरिएशंस रही जमती नॉर्थ साउथ डिवाइडेड सदर्न स्टेट्स माने जो रहिले दे आर एक्सपीरियंसिंग रैपिड एजिंग एंड श्रिंकिंग वर्कफोर्सेस नॉर्दर्न स्टेट्स मानकर हायर टीएफआर रही एंड ये जो डाइवर्जेंस रही मेक्स द इंटरस्टेट माइग्रेशन क्रुशियल क्लोजिंग विंडो ऑफ डिविडेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया एबे गोटे यूथ बल्ज को एक्सपीरियंस करूची जोटा कि गोटे मीडियन एज ऑफ अबाउट 28 इयर्स सिग्निफिकेंटली यंगर देन मेनी मेजर इकोनॉमीज हाउएवर ए जो वर्किंग एज पॉपुलेशन रहिला एटा 41 अराउंड पीक करिवो सो जदि तांको प्रॉपर स्किल आउ कैपेसिटी बिल्डिंग हबनी तो से माने एडिक्वेट जॉब से माने नहीं परिबेनी एम्प्लॉय से माने हेई परिबेनी सो द डेमोग्राफिक डिविडेंड रिस्क टर्निंग इनटू अ डेमोग्राफिक लायबिलिटी मार्क्ड बाय अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशल स्ट्रेस इंडिया रो पॉपुलेशन पॉलिसी अप्रोच रे इंडिया पॉपुलेशन प्लानिंग करूची विद द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 over time policy it has shifted from target based approach to voluntary right based framework national population policy 2000 और national health policy 2017 see stabilization informed choice and improve maternal चाइल्ड हेल्थ आउटकम्स उपरे अधिका फोकस करूछंती चैलेंज कोन फर्स्ट द जॉबलेस ग्रोथ स्किल मिसमैच जहाँ तांकु जदि स्किल दिया जिवो जदि सेटा इंडस्ट्री रेलेवेंट कॉम्पिटेंसी हिसाब रे हेई नथिबो ताहाले से माने जॉब तांकु मिलिबनी uneven regional development female labor force participation is low old age dependency is increasing strategic steps to convert demographic potential into economic power education और training को अलाइन करा जाऊ विथ इंडस्ट्री 4.0 रिक्वायरमेंट्स लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करा जाऊ वुमेन लेड डेवलपमेंट को एडवांस करा जाऊ देन नेशनल माइग्रेशन फ्रेमवर्क गोटे डेवलप करा जाऊ जो थरे कि it will ensure the portability of welfare and labor protection across the states silver economy गोटे prepare करा जाऊ through policies that will enable the productive aging reskilling senior participation global skill corridors create करा जाऊ एबे हमर आसला आईआर इंडिया और यूरोपियन यूनियन भितर गोटे नेगोशिएशन कंप्लीट हेची फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए माने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंपोर्टेंस कौन एफटीए रो कि ये इकोनॉमिक एंगेजमेंट को डीपेन कराए विथ इंडियाज लार्जेस्ट गुड्स ट्रेडिंग पार्टनर ट्रेड एथरे डाइवर्सिफाई करा जाए
एंड ग्लोबल वैल्यू चेन्स रे इंडिया रो जो रोल रही है एनहांस हम रूल बेस्ड ट्रेड इंटीग्रेशन स्ट्रेंथन हम इंडिया ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रे एटा गोटे इकोनॉमिक पिलर हिसाब रे एक्ट करिवो की कमिटमेंट्स कोन रही फर्स्ट द मार्केट एक्सेस रे टैरिफ लाइन्स आउ इंडियन एक्सपोर्ट बाय वैल्यू आको कवर करा जाईची देन डीपेस्ट प्रिफरेंशियल एक्सेस अरेंजमेंट्स इट इज वन ऑफ इट बूस्ट टू लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स आमर रहिला ताको गोटे बूस्ट मिलिबो सर्विस मार्केट लिबरलाइजेशन 144 सर्विस सबसेक्टर्स को ए कमिटमेंट अंडर रे आना जाईची एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सेस रे एथिरे प्रिफरेंशियल एक्सेस फॉर सिलेक्टेड एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एटा कॉम्पिटिटिवनेस को एनहांस करूची ऑफ इंडिया एग्री एक्सपोर्ट्स एंड सपोर्ट्स ऑफ फार्मर इनकम्स एंड द रूरल लाइवलीहुड्स प्रोफेशनल मोबिलिटी रे प्रोफेशनल मोबिलिटी एथिरे बढ़िबो फ्रेमवर्क फॉर टेम्पररी मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स सच एज इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरीज contractual service suppliers and independent professionals regulatory cooperation एथरे cooperation enhance करा जिवो on sanitary and phytosanitary technical barriers to trade इंडिया रो जो कमिटमेंट्स रहिला एफटीए अंडर रे calibrated tariff liberalization market access on 92.1% on tariff lines 97.5% of EU experts okay service sector opening hela 102 service sub sectors then MSME friendly rules of origin just go through these data balanced IPR और trade digital framework भी एथरे cover ହେଇଛି major concerns होची कि protectionism को regulatory protectionism by the European Union environmental और labor standard risk acting as non-tariff barriers rather than the neutral regulations. Carbon border adjustment mechanism 2026 रे India exports of steel, aluminium of chemical से 20 to 35% tax equivalents face करी पारंती potentially neutralizing the tariff gains. EU deforestation regulation एटा geotagging और traceability of commodities require करे like coffee, rubber and wood. Compliance cost disproportionately burden small and marginal farmers. Asymmetry in tariff gains 75% Indian exports से माने already tariff below 1% से face करूछंती in the EU pre FTA India रो जो average tariff रहिला से it remains higher leading to concerns over the uneven reciprocity. Okay, competition from zero duty exporters कठारु तक competition अच्छी EU रा concern over India's regulation opposition to EU's quality control orders viewed by the EU as trade restrictive facility level audits. इंडिया जर्मनी रिलेशन इंडिया जर्मनी से माने तांकर गोटे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिवाइटलाइज करिसेंती एंड 25 इयर्स हे जाइछि तांकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एंड 75 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन की आउटकम्स कौन थिला जर्मन कर जो चांसलर से विजिट करथिले डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन गोटे जॉइंट रोड मैप ऊपर से माने एग्री करचंती ऑन को डेवलपमेंट को प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स जो थरे कि डिफेंस एक्सपोर्ट क्लियरेंसेस फास्ट हबो एंड जो इंडिया रो एक्सरसाइज रहिला इंडिया रो नेवल एक्सरसाइज एयर एक्सरसाइज रहिला मिलान हैला इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम और तरंग शक्ति से तो जर्मनी पार्टिसिपेट करिवो ट्रैक 1.5 फॉरेन पॉलिसी लॉन्च हेची एंड सिक्योरिटी डायलॉग भी डीपन हेची मोबिलिटी एंड पीपल टू पीपल टाइज भी एतरे कवर हेची एजुकेशन स्किलिंग रे हायर एजुकेशन रोड मैप गोटे अडॉप्ट हेची जर्मन यूनिवर्सिटीज मानको इनविटेशन मिलिची टू एस्टैब्लिश कैंपसेस इन इंडिया एंड ऑल क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स भी एतरे कवर हेची जेमति क्रिटिकल मिनरल्स हला सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इंडिया जर्मन डिजिटल डायलॉग प्लान एतरे फाइनलाइज हेची जोटा कि एआई डाटा गवर्नेंस टेलीकॉम इंडस्ट्री 4.0 ए सब एतरे कवर हेची इंडो पैसिफिक एंड कनेक्टिविटी भी कवर हेतिला बायलैटरल इंडो पैसिफिक डायलॉग मेकानिज्म गोटे लॉन्च हेची फ्री ओपन रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक एटा तांकर जो कमिटमेंट थिला सेटा एतरे फर्दर रीअफर्म हेची ग्लोबल गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी is also discussed and reaffirmed. UN Security Council reforms, G4 framework hela, counter terrorism cooperation, UN 1267 regime. Okay, key facets kono economic and commercial relations. Bilateral trade in goods सेटा US $50 billion क्रॉस करछि जर्मनी होची इंडिया 8th
लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। मेक इन इंडिया मिडिल स्टैंड प्रोग्राम ये जर्मन एसएमई को एंड फैमिली ओन्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट को इंडिया रे फैसिलिटेट करे। डेवलपमेंट कोऑपरेशन under green and sustainable development partnership German uh, 1 euro billion annually uh, till 2030 से commit करची already in areas of renewable energy, sustainable urban development, water, forest and agriculture. गोटे triangular development cooperation, joint triangular development cooperation in third countries aligned with the SDGs. Defense cooperation एथरे रहिबो हमें डिस्कस कले। चैलेंज होची कि इकोनॉमिक स्केल अनइवन अछि कना इंडिया जर्मनी जो ट्रेड रही सेटा मॉडेस्ट रही, इट इज नॉट हाई एज कंपेयर टू द जर्मनी चाइना ट्रेड। चाइना और रशिया पर्सपेक्टिव से अच्छी कि जेमती कि जर्मनी चाइना को गोटे सिस्टमिक इकोनॉमिक राइवल हिसाब रे निए, while India sees China as a direct security threat. Defense asymmetries जेमती कि इंडिया जो लेगेसी रही डिपेंडेंस ऑन रशियन प्लेटफॉर्म्स, higher cost and conditionalities of German defense exports and slow deal finalization, slow progress on India EU trade framework, migration and integration issues are also there. Steps कौन नबा दरकार कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन द फर्स्ट हो, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो इंडिया और यूरोपियन यूनियन रो जो एफटीए रही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, डिफेन्स और सिक्यूरीटी कोऑपरेशन को डिपेंड करा जाऊ, ग्रीन एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप उपरे ताकू स्ट्रेंथन करा जाऊ, एसएमई एंड मिडल स्टैंड एंगेजमेंट को बूस्ट करा जाऊ, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन को आहुरी एडवांस करा जाऊ, promoting the interoperability between the India's digital public infrastructure गोटे global governance leadership, joint global governance leadership को establish करा जाऊ। पैक सिलिका एंड इंडियाज इंक्लूजन, यूनाइटेड स्टेट्स ये अनाउंस करची कि इंडिया विल बी इनवाइटेड टू जॉइन द पैक सिलिका। एटा पैक सिलिका होची गोटे यूएस लेड कोआलिशन एम्ड एट सिक्यूरिंग क्रिटिकल मिनरल्स, सिलिकॉन एंड एआई सप्लाई चेन्स। पैक सिलिका कौन आम जानले कि एटा गोटे स्ट्रेटेजिक कोआलिशन जहाँकि यूएस लेड एंड से को एरिया ऊपर फोकस करे। कोर ऑब्जेक्टिव हो कि केमती कोअर्सिव डिपेंडेंसी रिड्यूस हबो, सप्लाई चेन को से सिक्योर करि परिबे एंड ताको डाइवर्सिफाई करि परिबे, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करिबा, एआई सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट को स्केल करिबा फर्दर, एगुडी होउछ तारा कोर एम, कोर ऑब्जेक्टिव्स। पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज एंड इकोसिस्टम किए के पार्टिसिपेट करछन मेंबर्स जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नेदरलैंड, यूके, इजराइल, यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया एमाने सब पार्टिसिपेट करछंदी। स्ट्रेटेजिक रैशनल बिहाइंड द पैक सिलिका कि चाइना रो जो डोमिनेंस रही 60% ऑफ ग्लोबल लिथियम, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ एलिमेंट ताकू केमिति रिड्यूस करा जिवो, एंड जो पैक सिलिका इट रिफ्लेक्ट्स अ शिफ्ट फ्रॉम मार्केट लेड ग्लोबलाइजेशन टू ट्रस्टेड सप्लाई चेन अलायंसेस driven by national security concerns. इंडिया और पैक सिलिका इनिशियली इंडिया को सेथरु एक्सक्लूड करके रखा जाइतला काहेकि इंडिया गोटे मेजर ग्लोबल होल्डर नुह इन क्रिटिकल मिनरल्स, सेथिरे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज रे भी से लैक करे जे कि फर्स्ट फेज ऑफ पैक सिलिका रो गोटे प्रायोरिटाइज्ड एरिया थिला। किंतु एबे पैक सिलिका इंडिया में मैटर कोन पई करूचे, सप्लाई चेन सिक्यूरिटी पाएंगी। ये वल्नरेबिलिटी रिड्यूस करिबो टू मिनरल एंड सेमीकंडक्टर शॉक्स इन डिफेंस, क्लीन एनर्जी एंड डिजिटल सेक्टर्स। स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी एक्सेस मिलिबो इंडिया को टू एडवांस चीप इकोसिस्टम, एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड सेटलिंग फोरम्स, जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग, इंडस्ट्रियल अपग्रेडिंग। इंडिया ऑनगोइंग इनिशिएटिव कौन जोटा कि अलाइन होची विथ पैक सिलिका, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया एआई मिशन, इंडिया क्रिटिकल मिनरल मिशन, ये सब पैक सिलिकार कोर ऑब्जेक्टिव सहित अलाइन होची एंड आल्सो मिनरल सिक्यूरिटी पार्टनरशिप। कॉन्स्टेंट्स कौन कि डोमेस्टिक रिजर्व लिमिटेड अच्छी, डिपेंडेंट एबे भी अच्छी इंपोर्टेड सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट और मटेरियल्स रे, एंड टेक्नोलॉजी गैप इज एग्जिस्टिंग इन इंडिया। स्ट्रेटेजिक वे फॉरवर्ड कौन हबा दरकार कि मार्केट स्केल ऊपर लेवरेज करा जाऊ। इंडिया रो जो लार्ज डिमांड रही बेस टू अट्रैक्ट द पैक सिलिका इन्वेस्टमेंट इन फैब्स, ओसैट एंड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनरल डिप्लोमेसी को एक्सेलरेट करा जाऊ, निश स्ट्रेंथ पर फोकस करा जाऊ एंड स्टैंडर्ड एंड ट्रस्ट बिल्ड हो।
India's foreign policy recalibration 2025 এটা एमितिका ईयर जे कि इमर्ज हेची as a year of strategic shock and adjustment for India's foreign policy marked by simultaneous external pressures, regional instability and selective diplomatic gains. Key diplomatic challenges जोटा कि इंडिया फेस करूची फर्स्ट द strained relationship with the यूनाइटेड स्टेट जो प्यूनिटिव टैरिफ्स है कि रशिया को रिलेटेड रशियन ऑयल इंपोर्ट्स को लेकिन जहाँ भी यूएस रा कंसर्न्स है सो इंडिया इज फेसिंग अ strained relationship with यूनाइटेड स्टेट्स ओके जमती कि पॉलिटिकल सिग्नलिंग अंडरमाइन द ट्रस्ट इन ऑपरेशन सिंदूर आमर हेतिला F-16 अपग्रेड्स फॉर पाकिस्तान अप्रूवल so these are the things that are straining the relationship of India with the US. Regional instability अच्छी जिम तार neighborhood hostile neighborhood अच्छी पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश वेस्ट एशिया रे भी टर्मोइल अच्छी इजराइल ईरान टेंशंस एससीओ ब्रिक्स जो कि ईरान गोटे मेंबर अच्छी rise of the right wing transactional politics globally energy और climate policy dilemma भी रही गोटे OPEC driven oil glut an OPEC driven oil glut lowered the prices weakening the incentives for renewable transition despite India's long term climate investment major diplomatic success कौन रही इंडिया रो 2025 रे Canada first of all the Canada सहित तार reset visa diplomatic staffing ଆଉ envoys ର जो restoration କରାଗଲା following the high level political engagement so it demonstrated कि इंडिया रो जो ability अछि to de-escalate disputes without considering core security concerns Taliban सहित pragmatic engagement reframed Afghanistan as the enemy's enemy cautious reapproachment with China resumption of Kailash Mansarovar Yatra high level engagement at SCO summit strengthening the neighborhood ଯେମିତି ଭୁଟାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାଲଦୀପ୍ସ ଆଙ୍କ ସହିତ ଟାଇଜ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା एड ଆଉ ରାପିଡ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସ ଫର୍ଷ୍ଟ ରେସ୍ପଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ନେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡର ହିସାବରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ଇମେଜ ରହିଛି strategic implication କଣ ରହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆର କି strategic certaintyର erosion the assumption of the US as a predictable long term partner ଏଟା ହଉଛି decisively challenged so accelerated India's shift towards multipolar and diversified engagement rising cost of strategic autonomy जो sanctions लागू छै sanction linked pressure जो रही छै it highlighted the material cost of balancing Russia and the West internal and external security risk increase करची then foreign policy ଆଉ domestic policy ର linkage asymmetric ଅଛି ମାନେ uniform ନାହିଁ इंडिया ର strategic response and recalibration कौन So India ର strategic response कौन थिला issue based alignment over the block politics कि US सहित selectively cooperate करिवो and quad on maritime security AI critical technologies
टेक्नो इकोनॉमिक पार्टनरशिप यूरोप सहित डिपेंड करिवो एंकर्ड इन अ फोर्थकमिंग एफटीए जोटा हमें ऑलरेडी डिस्कस करछे मेजर पावर राइवलरीज decoupling from major power rivalries नेबरहुड फर्स्ट और नेबरहुड स्टेबिलिटी पॉलिसी को प्रथमे आ उपरे फोकस करिबा फोर्स्ड pragmatism ओवर नॉर्मेटिव आइडियलिज्म जेमति कि एंगेजमेंट विथ द तालिबान चाइना कनाडा एटा रिफ्लेक्ट करूची इंटरेस्ट बेस्ड रियलिज्म नॉट आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट इंडिया विलिंगनेस जो रही सिग्नल इंडियाज विलिंगनेस टू प्रायोरिटाइज नेशनल इंटरेस्ट ओवर द मोरल पोस्चरिंग leadership through the global agenda setting position India as a bridge builder IMEC revive as a peace linked economic corridor offer India as a neutral venue for conflict mediation and building domestic resilience as foreign policy backbone FTS को use करा जाओ to diversify the trade and fast track defense आत्मनिर्भरता को करा जाओ to reduce the dependence on any single power center इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए इंडिया न्यूजीलैंड भितर भी गोटे एफटीए हेची कंक्लूजन टू नेगोशिएशन एंड एथरे कोन हेची न्यूजीलैंड विल ग्रांट जीरो ड्यूटी एक्सेस ऑन 100% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स टू फैसिलिटेट $20 billion in FDI foreign direct investment into India over next 15 years ओके बैकग्राउंड कोन इंडिया जो अर्लियर एफटीए रहिला सेथरे रिजल्ट या आसे कि जो इंपोर्ट बढ़े विदाउट प्रोपोर्शनल एक्सपोर्ट और सर्विस गेन्स ओके एंड ये जो आउटकम्स रु आमे जो आमर जो पूर्व एफटीए जो आउटकम्स रही ताठू आमे जहाँ शिखिले इंडिया इंक्रीजिंगली परस्यूड द कैलिब्रेटेड टैरिफ लिबरलाइजेशन प्रोटेक्टिंग द सेंसिटिव सेक्टर्स एंड एक्सप्लिसिट सेफगार्ड्स ट्रेड लिबरलाइजेशन आर्किटेक्चर रे न्यूजीलैंड रो कमिटमेंट कोन रही तो आमे देखिले कि 100% जीरो ड्यूटी एक्सेस ऑन 100% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स रहिबो एवरेज टैरिफ ऑफ 2.2% एलिमिनेशन ऑफ द एवरेज टैरिफ ऑफ 2.2% इंडिया रो कमिटमेंट कोन रहिबो लिबरलाइजेशन ऑफ 70% ऑफ टैरिफ लाइंस एंड 95% ऑफ न्यूजीलैंड्स एक्सपोर्ट बाय वैल्यू एंड एरो फेज बाय फेज करा जिवो फेज टैरिफ रिडक्शन इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क कोन कि $20 billion इन्वेस्टमेंट रहिबो फैसिलिटेशन कमिटमेंट बाय न्यूजीलैंड ओवर 15 इयर्स रीबैलेंसिंग मेकानिज्म इंडिया को अलाउ करिवो टू सस्पेंड द एफटीए कंसेशंस सर्विसेस लिबरेशन रे इंडिया रो मोस्ट एम्बिशियस सर्विस ऑफर टू डेट एटा रहितला जोथरे कि 118 टा सर्विस सेक्टर ओपन हेची मोबिलिटी एंड ह्यूमन कैपिटल प्रोविजन्स रे स्टूडेंट्स माने एथरे कवर होचंदी एथरे प्रोफेशनल्स माने कवर होचंदी यूथ मोबिलिटी एंड पीपल टू पीपल लिंक्स उपरे फोकस करा जाउची एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस गेन्स रे ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलिबो टू टेक्सटाइल्स लेदर कारपेट एंड ऑटो कंपोनेंट्स रिमूवल ऑफ टैरिफ्स अर्लियर रीचिंग अप टू 10% इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ जीआई रिकॉग्निशन भी एतरे कवर हेची जोतरे की अमेंडमेंट ऑफ इंडिया न्यूजीलैंड्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लॉ GI protection extended beyond wines and spirits. India रो जो GI रहिला it granted parity with the EU products. So it strengthened the protection of traditional knowledge and rural livelihood. Safeguard and managed liberation भी दिया जायछि गोटे gradual tariff reduction over 10 years. Strategic significance कोन एटा होछि 7th free trade agreement since 2021. Third free trade agreement with a Five Eyes country after Australia and UK. Right. Then एबे आसला हमरो economic sector. Economy section. And first हमें देखिबा इंडियाज एमएसएमई सेक्टर इन 2025 गोटे ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर 2025 ये गोटे मेजर प्रोग्रेस मार्क करिछि इन इंडिया रो जो एमएसएमई सेक्टर रहिला मेजर अचीवमेंट्स कोन
फॉर्मलाइजेशन ड्राइव ओवर 7.3 crore एंटरप्राइजेस से माने ऑलरेडी उद्यम प्लेटफॉर्म रे तांको रजिस्टर करा जायछि क्रेडिट और फाइनेंशियल सपोर्ट भी तांको मिलुछि स्ट्रांगली थ्रू द पीएम ईजीपी सीजीटी एमएससी जे कि कोलैटरल फ्री क्रेडिट गारंटीज दिए ओके क्लस्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हेची मार्केट एक्सेस तांकर ब्रॉडन हेची इंक्लूसिव प्रोक्योरमेंट होची पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रॉम एमएसएमईज से जो 25% टारगेट थिला ताको एक्सीड करिची एससी एसटी एंटरप्राइज प्रोक्योरमेंट इंक्रीज सब्सटेंशियली अंडर द नेशनल एससी एसटी हब ओके टेक्नोलॉजी इनोवेशन और डिजिटल गवर्नेंस रे भी हमें इंप्रूवमेंट देखिया को पाइछु जेमति कि जेड हला जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट एमएसएमई हैकाथॉन्स चैंपियंस पोर्टल एंड ऑल खदी कॉयर एंड ग्लोबल आउटरीच खदी आउ विलेज इंडस्ट्री रो जो सेल रही से रेकॉर्ड ग्रोथ हासिल करी सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई फॉर द इंडियन इकोनॉमी एमएसएमई माने जो रहिले से 30% जीडीपी रे कंट्रीब्यूशन करंती 36% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट रे कंट्रीब्यूट करंती एंड 45% ऑफ एक्सपोर्ट्स 12 करोड़ पीपल एथरे चाकरी पाइचंती एम्प्लॉय हेचंती एथरे रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन एथरे प्रमोट हुए रीजनल बैलेंस प्रमोट हुए सप्लाई चेन डोमेस्टिक प्रोडक्शन रेजिलियंस वुमेन एसटी एसटी एंटरप्रेन्योर्स समस्ते समस्त को सपोर्ट मिलुची बट चैलेंजेस कौन कि क्रेडिट गैप रही डिलेड पेमेंट्स रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस बर्डन हैला हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट हैला लो अडॉप्शन ऑफ ई कॉमर्स एआई एडवांस टेक्नोलॉजीज ग्लोबल क्वालिटी और ईएसजी स्टैंडर्ड्स मीट करिबारे डिफिकल्टी मिसिंग मिडल प्रॉब्लम हैला India's rice supremacy, boon for food security, challenge for sustainability. Okay, India ଏବେ ଚାଇନା को भी overtake କରି ସାରିଛି to become world's largest rice producer in 2025. Now it accounts for nearly 40% of global rice exports. राइस हूँ आमर स्टेपल फूड जे कि 65% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन को कंज्यूम करती 1/4 ऑफ इंडियाज क्रॉप एरिया ये कवर करे देन एटा हूँ गोटे खरीफ क्रॉप सदर्न स्टेट ऑफ वेस्ट बेंगल रे अच्छा खासा मल्टीपल राइस क्रॉप्स एनुअली ग्रो हुए क्लाइमेटिक एंड एग्रोनॉमिक फीचर हूँ आर हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दरकार मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल दरकार सॉइल जो थे कि गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी से राइस कल्टिवेशन बेटर हो पार गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कौन राइस कल्टिवेशन को आहरी बेटर करिया पाएंगी प्रमोट करिया पाएंगी डायरेक्ट सीडेड राइस क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटी रो डेवलपमेंट अंडर निक्रा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन फोर्टिफाइड राइस अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग अडॉप्शन टेक्निक की कंसर्न्स कौन कि वाटर क्राइसिस ऑफ वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट producing 1 kg of rice it requires this much amount liters of water so severe groundwater depletion एतरे हुए एनवायरमेंटल इंपैक्ट रही कि से जो राइस फील्ड्स रहिला से माने मिथेन आ पोटेंट मिथेन गैस को से एमिट करंती जे कि गोटे पोटेंट ग्रीन हाउस गैस हेल्थ रिस्क भी एते रही आर्सेनिक कंटामिनेशन इन फ्लडेड राइस फील्ड इन ईस्टर्न इंडिया हाई पेस्टिसाइड यूज हुए इकोनॉमिक बर्डन रही कि हाई इनपुट कॉस्ट फॉर इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स डीप वेब बोरल्स गला सब्सिडीज ऊपर ए माने डिपेंड करंती जे कि फार्मर को राइस मोनोकल्चर रे लॉक कर देछि climate vulnerability rising temperature or erratic rainfall is a problem then global food security implication रे india 40% global exports कराउची राइस रे सो वे फॉरवर्ड कौन हवा दरकार कि सब्सिडी स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करा जाऊ वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करा जाऊ ग्राउंड वाटर गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करा जाऊ एंड रेस्ट्रिक्ट बोरवेल्स इन द क्रिटिकल जोन्स जोटी ऑलरेडी अच्छा खासा ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो सारी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस को इंप्रूव करा जाऊ फार्मर्स इनकम एंड रिस्क प्रोटेक्शन को एनहांस करा जाओ ओके तापर हमें देखिबा ग्रॉस ग्रोथ रु जेन्युइन ग्रोथ को शिफ्ट इंडिया रा शिफ्ट फ्रॉम जीडीपी टू एनडीपी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मॉस्पी it has released of the first advanced estimate of gdp for FY 25-26 projecting 7.4% real gdp growth India recently became the world's fourth largest economy by nominal GDP. GDP कहले हमें कौन बुझू
जीडीपी होची टोटल मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज गोटे कंट्री रे जेते भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होची एंड से माने जितोल मार्केट को जाउछन ताकर टोटल जो मॉनिटरी वैल्यूटा रहिला ताकू कुहा जाउची जीडीपी एंड इट इज मेजर्ड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड इट मेजर्स द साइज एंड पेस ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी के जीडीपी रो केतरा टाइप अछि गोटे नॉमिनल रियल और पोटेंशियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी होची करंट मार्केट प्राइस रे ताको मेजर करा जाय आ जेते बेले नॉमिनल जीडीपी रे इन्फ्लेशन को माइनस कर दिया जाए आमको मिले रियल जीडीपी पोटेंशियल जीडीपी होची मैक्सिमम सस्टेनेबल आउटपुट विदाउट ट्रिगरिंग द इन्फ्लेशन इवोल्यूशन केमिति हैला कि अर्लियर एटा को फैक्टर कॉस्ट रे कैलकुलेट कराउतला पोस्ट 2015 रु जीडीपी को शिफ्ट कले देन सेक्टरल कवरेज को एक्सपांड करा गला देन अपकमिंग बेस रिवीजन टू 2023 2022 2023 लिमिटेशन की कैपिटल डेप्रिसिएशन को एतरे इग्नोर करा जाए एनवायरमेंटल कॉस्ट एतरे गणा जाएनी सस्टेनेबिलिटी इनफॉर्मल और अनपेड वर्क जो गुड़ा रहिला ताको सब अंडर एस्टिमेट करा जाए इनइक्वालिटी रहिची काउंट्स द डिफेंसिव एक्सपेंडिचर एज ग्रोथ जेमति कि हमर डिजास्टर रिकवरी हैला पॉल्यूशन क्लीन अप हैला क्राइम रिलेटेड स्पेंडिंग हैला increase the GDP even though they do not enhance the welfare. Okay, so highlights कोन first advance estimates रो कि overall growth हेची real GDP projected at 7.4%, nominal GDP 8 and real GVA growth at 7.3%. Sector performance service sector रे स्ट्रॉन्ग एक्सपांशन देखा जाइए एंड मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन रे एक्सपांशन देखा जाइए एग्रीकल्चर रे भी मॉडरेट ग्रोथ देखा जाइए यूटिलिटीज also showed gradual growth demand side drivers रे private consumption momentum strong रही investment growth robust रही net domestic product कोन net domestic product होची जीडीपी रो जेते बेले हमें डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो तापर हमको मिले net domestic product so under SNA 2025 it also deducts the depletion of the natural resources so formula होची ई formula टा मन रखिबे एनडीपी होची जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस natural resource depletion एनडीपी जीडीपी ठारू सुपीरियर कोन पाई कि हमें देखिले कि एटा कैपिटल कंजम्पशन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन सस्टेनेबिलिटी ओवर एस्टिमेशन लॉन्ग टर्म प्लानिंग ए सब को भी कैटर करूची अंडरस्टैंडिंग द एसएनए 2025 एसएनए 2028 को एटा रिप्लेस करिची एंड एटा जीडीपी रु जीडीपी ठारू भी एटा बियॉन्ड जाई की सस्टेनेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्लूड करूची नेशनल कैपिटल अकाउंटिंग रिन्यूएबल एसेट्स मिनरल डिप्लेशन ये सब रिकॉग्नाइज करूची डिस्ट्रीब्यूशनल अकाउंट एतरे इंक्लूड होची ओके इम्प्लिकेशंस कोन इंडिया पई की मोर रियलिस्टिक ग्रोथ असेसमेंट सस्टेनेबिलिटी ऊपर स्ट्रांग फोकस रही क्वालिटी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लानिंग ऊपर स्ट्रांग फोकस रही सो इट विल हेल्प एक्सेस वेदर ग्रोथ इज एसेट बिल्डिंग और एसेट डिप्लीटिंग गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स ड्राइविंग इंडिया's logistic transformation गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जोटा अच्छी सेटा it has significantly contributed to reducing India's logistic cost to 7.9% of the GDP सो कॉन्टेक्स्ट कौन इंडिया जो लॉजिस्टिक सेक्टर रहा है फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पाई की बहुत क्रिटिकल आउ ग्लोबल ट्रेड इंटीग्रेशन पाई की भी बहुत क्रिटिकल एंड फ्रेट मूवमेंट was fragmented across road, rail, ports and airports. गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स कहले हमें कौन बुझू गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स है एटा हूँ गोटे मॉडर्न मल्टीमोडल रेलवे कार्गो हब एटा को जीसीटी पॉलिसी 2021 अंडर डेवलप करा जाइछि ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जीसीटी इज नीडेड कौन पाई दरकार फ्रेट मूवमेंट हाई कार्गो हैंडलिंग टाइम कंजेशन को रिड्यूस करिवा पाई एंड इनएफिशिएंट लॉजिस्टिक्स को हैंडल करिया पई जीसीटी दरकार ऑपरेशनल फीचर्स रे हमें देखिया गले इंजन ऑन लोड मेकानाइज्ड लोडिंग सिस्टम्स हला बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रेलवेज सस्टेनेबिलिटी एंड कॉस्ट एडवांटेज भी एथे रोजी जोटा कि रेल ट्रांसपोर्ट टा एटा होची चीपर देन रोड ट्रांसपोर्ट रेल बेस्ड फ्रीट होची इट एमिट सब्सटेंशियली लो कार्बन एमिशंस सो की जीसीटीज स्ट्रेंथनिंग द लॉजिस्टिक्स मानेसर टर्मिनल ए सब नेम गुडा एठी आपण नोट करनेबे प्रोग्रेस सो फार होची हंड्रेड्स ऑफ जीसीटीज अप्रूव हो सारची फ्रीट रेवेन्यू फ्रॉम जीसीटी सेटा ऑलरेडी ग्रो करिची इन सिग्निफिकेंट इयर्स प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी एतरे इंक्रीज हेची सो जीसीटी 2021 जीसीटी 2021 होची एतरे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करा जाउची
freight rebates, commercial use of surplus railway land, infrastructure growth एसबू ऊपर फोकस करा जाउची. इंडिया रो लॉजिस्टिक लैंडस्केप लॉजिस्टिक होची गोटे मेजर इकोनॉमिक पिलर जे कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करे. मेजर लॉजिस्टिक रिफॉर्म इन इंडिया जेमति कि हमर नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी हला, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. एंड चैलेंजेस कौन रही कि लॉजिस्टिक कॉस्ट एथरे होची हाई. रोड रो एथरे डोमिनेंस रही जेहेतु रेलवे चीप रही किंतु बट रोड इज रोड ट्रांसपोर्ट इज डोमिनेटिंग हियर. रेल कैपेसिटी कॉन्स्टेंट्स रही. पोर्ट लिमिटेशंस फ्रैगमेंटेशन जेमती कि बहुत गुड़े स्मॉल फ्लीट ऑपरेटर्स रही, सो इट इज डिफिकल्ट टू स्टैंडर्डाइज सर्विस एंड प्राइसिंग. टेक्नोलॉजी गैप रही. एनवायरमेंटल कंसर्न्स रही. मेजर्स कौन नबा दरकार कि इंफ्रास्ट्रक्चर को आहुरी बढ़ा जाऊ, फास्ट ट्रैक डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स करा जाऊ, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स ऊपर फोकस करा जाऊ, improved last mile connectivity, regulatory simplification, promote technology adoption जेमती कि AI हला, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हला, ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन, अपग्रेड वेयरहाउसिंग, प्रमोट ग्रीन लॉजिस्टिक्स. डिजिटल व्हाइट रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज डेयरी सेक्टर. जो डेयरी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड रही, इट इज लीडिंग द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज डेयरी सेक्टर. इंडिया हूँ वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर सिंस 1988. एंड कौन कौन स्टेप्स निया जाइछि टू डिजिटलाइज द इंडियाज डेयरी सेक्टर. नेशनल डिजिटल लाइवस्टॉक डेटाबेस, भारत पशुधन, ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम्स, एनडीडीबी डेयरी ईआरपी. एटा हूँ गोटे कॉम्प्रिहेंसिव एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म जे कि फाइनेंस, इन्वेंटरी, सेल्स, एचआर, पेरोल आउ मैन्युफैक्चरिंग को कवर करे. इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ. सीमेन स्टेशन मैनेजिंग सिस्टम, एटा बुल मानकर लाइफस्टाइल, सीमेन प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल मैनेज करे. इंटरनेट बेस्ड डेयरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, एथरे डेटा शेयरिंग को सेंट्रलाइज करा जाए. एटा गोटे डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म, centralized data sharing platform for milk unions and federations. Milk route optimization using GIS. एंड डेयरी सेक्टर जो रही हमर इंडिया रो तार स्टेटस कौन अच्छी. ग्लोबल पोजिशन रे इंडिया हूँ 1/4 ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन. प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी रे मिल्क प्रोडक्शन कंटिन्यूज टू राइज स्टेडिली. एटा स्टेडिली राइज करी करी चलची. ग्रोथ एंड कैटल कैटेगरी रे हाईएस्ट ग्रोथ देखा जाइछि इन एक्सोटिक एंड क्रॉस ब्रीड कैटल. कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चरल जीडीपी रे डेयरी कंट्रीब्यूट्स ए मेजर शेयर टू टोटल एग्रीकल्चर एंड एलाइड आउटपुट वैल्यू. व्हाइट रेवोल्यूशन एंड ऑपरेशन फ्लड कौन. व्हाइट रेवोल्यूशन होची इंडिया रो ट्रांसफॉर्मेशन इनटू ग्लोबल डेयरी लीडर. आकु इंप्लीमेंट करा जाइतला थ्रू ऑपरेशन फ्लड बाय एनडीडीबी अंडर द डॉक्टर वर्गीस क्यूरेन. व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 होची एतरे प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट ऊपर फोकस करा जाउची. एंड जस्ट अ सेकेंड. हाँ, एंड वुमेन एम्पावरमेंट ऊपर फोकस करा जाउची. की चैलेंज कौन कि क्लाइमेट और डिजीज रिस्क रही. हाई स्ट्रेस से मिल्क इल्ड को रिड्यूस करुची. डिजीज आउटब्रेक जेमती कि लंपी स्किन डिजीज है से प्रोडक्शन लॉस करुची. इकोनॉमिक प्रेशर, स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स भी रही कहीं जो एवरेज मिल्क इल्ड्स रहा it is low compared to the global standards. Breeding and genetic concerns भी रही. excessive cross breeding risk, erosion of the indigenous breeds. Environmental impact. So what should be the way forward कि genetic improvement करा जाओ. सेक्स सॉर्टेड सीमेन को प्रमोट करा जाए फॉर बेटर फीमेल काल्फ रेशियो. न्यूट्रिशन और मीथेन रिडक्शन, बैलेंस्ड और डाइजेस्टिबल फीड को प्रमोट करा जाओ. डिजिटल एंड प्रिसिशन टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करा जाओ जेमती कि IoT कॉलर्स हला, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट एक्सेस. इंस्टॉल विलेज लेवल चिलिंग यूनिट्स. Converging MSME schemes towards a unified and efficient support ecosystem. नीति आयोग से गोटे रिपोर्ट रिलीज करछंदी अचीविंग efficiencies in MSME sector through the convergence scheme. ए रिपोर्ट टा प्रपोज करछि कि गोटे स्ट्रेटेजिक रोड मैप हो to integrate and streamline more than 18 MSME schemes. So एटा गोटे convergence approach. MSME जहाँ को आमे इंडिया इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी कही था, बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक फ्रेमवर्क. MSME कहले आमे कोन बुझू. MSME होचंदी से एंटरप्राइज जे कि क्लासिफाई हेचंदी. जस्ट अ सेकंड.
जहाँ को क्लासिफाई करा जाउची बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी एंड एनुअल टर्नओवर. सो द governed under the MSME Development Act and revised classification framework effective from April 2025. इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या कि इंडिया जो जीडीपी रहिला सी 1/3 तक कंट्रीब्यूट करूछंती सेथिरे अकाउंट फॉर almost half of India's exports, employ a large share of the country's workforce and produce thousands of diverse products. Formalization effort रे जो majority of MSME जो रहिला से माने informally operate करूचंती. उद्यम registration portal तांकर self registration को enable करूची. Sectoral composition रे majority जो MSME अछंती से माने service sector रे अछंती with the rest in manufacturing. So strong rural presence तांकर अछि, decentralized development को से माने support करंती and inclusive growth को भी support करंती. की institution जो जे की MSME को support करंती, development commissioner रहिले हमर तापरे आउ किए खदी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमिशन, कॉयर बोर्ड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, एनआईएम एसएमई ये कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग ପାଇଁ କି रेस्पॉन्सिबल, एम गिरी एमजीआई आरआई ये सस्टेनेबल रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन ପାଇଁ କି रेस्पॉन्सिबल. कन्वर्जेंस कोन ପାଇଁ दरकार काइना ऑब्जेक्टिव समस्तकर ओवरलैप करे मोर और लेस. रिसोर्स यूटिलाइजेशन एतरे इंप्रूव हबो. बेनिफिशियरीज माने जो रहिले तांकर जो एक्सेस रही सेटा सिंप्लीफाई हबो. गवर्नेंस और मॉनिटरिंग बेटर हबो. आ जो ग्लोबल प्रैक्टिस रही ता सहित अलाइनमेंट मिलिबो. इट रिफ्लेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑन पार्टनरशिप्स. की रिकमेंडेशन एटी किछिटा एटी रिकमेंडेशन रही नीति आयोग रिपोर्ट रो कि सेंट्रलाइज डिजिटल पोर्टल गोटे एआई पावर्ड यूनिफाइड एमएसएमई प्लेटफॉर्म हो, क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम रो कन्वर्जेंस हो, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रैशनलाइजेशन हो, देन कि जो एबे भी जो ओवरलैपिंग स्किल स्कीम्स रही गोटे स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क हिसाब रे तांको मर्ज करा जाऊ. मार्केटिंग असिस्टेंस विंग गोटे क्रिएट करा जाऊ, डेडिकेटेड मार्केटिंग असिस्टेंस विंग. इंटीग्रेशन ऑफ इनोवेशन एंड रूरल एंटरप्राइज स्कीम्स इंटीग्रेट करा जाऊ. स्टार्टअप इंडिया को गोटे डेकेड हो सारी 10 वर्ष हो सारी फ्रॉम पॉलिसी पुश टू ग्लोबल इनोवेशन पावर हाउस. नेशनल स्टार्टअप डे जोटा कि केबे आमे देखिथिलु 16 जनवरी 2026 से प्राइम मिनिस्टर 10 इयर्स प्राइम मिनिस्टर मार्क्ड 10 इयर्स ऑफ द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली. एटा 16 जनवरी 2016 रे स्टार्टअप इंडिया लॉन्च होइतिला एंड एटा को इंप्लीमेंट करा जाइतिला बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड इंटरनल इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव रो कोर विजन होची केमती गोटे रोबस्ट इकोसिस्टम बिल्ड हबो फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. मेजर स्कीम्स एंड इंस्टीट्यूशनल पिलर्स किए थिले. फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, क्रेडिट गारंटी स्कीम मिलुतला स्टार्टअप्स मानक पई. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम गोटे थिला. देन स्टार्टअप इंडिया हब, स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क, देन मार्ग एंड इन्वेस्टर कनेक्ट पोर्टल्स जे कि मेंटरशिप, एडवाइजरी सपोर्ट एंड इन्वेस्टर स्टार्टअप लिंकेजेस फैसिलिटेट करथिले. इम्पैक्ट एंड अचीवमेंट कौन रही इंडिया रे एबे 2 लाख डीपी डबल आईटी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स अच्छी इंडिया रे. एनुअल रजिस्ट्रेशन जो 2025 रे हेइतिला सेटा रिकॉर्ड हाई हेइतिला. नियरली हाफ ऑफ द न्यू स्टार्टअप्स ओरिजिनेट फ्रॉम टियर 2 टियर 3 सिटीज. यूनिकॉर्न ग्रोथ एक्सपैंड हेइची. देन जो इकोसिस्टम रहिला स्टार्टअप इकोसिस्टम स्पैन्स फिनटेक, एडटेक, हेल्थ केयर, सास, स्पेस टेक, एग्रीटेक, क्लीन टेक सेक्टर्स. कॉम्प्लीमेंटरी इनिशिएटिव्स कौन जे कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को आउरी स्ट्रेंथन करे, जेमती कि हमर अटल इनोवेशन मिशन रहिला, जेनेसिस एंड द मेटी स्टार्टअप हब, टाइड 2.0 स्कीम, निधि, स्टार्टअप विलेज, एस्पायर स्कीम. ओके, की चैलेंजेस कौन कि एबे भी जो मेट्रोज रही से मेट्रोज बियॉन्ड जो एरियाज रहिला जेमती हमर टियर 2 टियर 3 सिटीज हला सेठी केते सारा स्टार्टअप्स एबे आसुचंती बना होचंती. सो एबे भी सेठी इंफ्रास्ट्रक्चर गैप रही. लिमिटेड लॉजिस्टिक, डिजिटल कनेक्टिविटी, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्मॉलर सिटीज. कंज्यूमर सेंट्रिक बायस रही. जो मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स रहिले दे फोकस ऑन कंज्यूमर सर्विसेज. सेगमेंटेड डिमांड स्ट्रक्चर टा सेगमेंट हेकी अछि. अनइवन परचेजिंग पावर, डोमेस्टिक रिस्क कैपिटल लिमिटेड हेकी अछि.
funding slowdown and closures are problem, low research and development intensity, exit and IPO challenges भी persist କରୁଛି, strategic measures to strengthen the ecosystem. जो डोमेस्टिक और रिस्क कैपिटल रहा ताको डिपेंड करा जाऊ, इंडस्ट्री एकेडमिया लिंक को स्ट्रेंथन करा जाऊ, रिसर्च मिशन बेस्ड फंडिंग अप्लाई करा जाऊ, डीप टेक स्केल अप सपोर्ट करा जाऊ, जोटा कि प्रोवाइड पेशेंट कैपिटल एंड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो एमर्जिंग एरियाज रहा, एमर्जिंग रिजन्स रहा से इंफ्रास्ट्रक्चर को आहरी इम्प्रूव करा जाऊ, जमती आमर टियर 2 आउ टियर 3 सिटीज रहिले, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को फर्दर सिंप्लीफाई करा जाऊ, ग्रीन सस्टेनेबल इनोवेशन को प्रमोट करा जाऊ. नेक्स्ट, household stability under stress, the silent risk in India's growth story. यूनियन बजेट 2026 ahead of that, इंडिया जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स रहा द रिफ्लेक्ट एग्रीगेट स्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस एंड ग्लोबल certainty. Context कौन जो private consumption रही, it accounts for nearly 60% of India's GDP, making household financial health central to macroeconomic stability. Key concern कौन रही कि जो volatile household declining and volatile household savings, net financial savings show sharp quarterly fluctuations, household debt rise करुची, borrowing driven consumption है सारची, stable consumption level despite weak income growth suggest increasing reliance on credit. Credit उपरे तांकर credit बा loan उपरे बेसी rely करुचंदी. Faster growth of financial liabilities. Exposure आउ unsecured retail credit रे हमें increase देखिया को पाइचे. Fiscal consolidation and risk transfer, public finance increasingly prioritize the capital investment over the direct income support. Implications कौन रही कि saving आउ investment रे गोटे gap persist करुची, fiscal crowding out से household saving को reduce करुची, जोटा कि domestic pool for government borrowing को limit करुची. Financial system implications. बैंक फंडिंग स्ट्रक्चर डिटेरियोरेशन बा डिक्रीज देखिया मिली, एसेट क्वालिटी रिस्क रही, वोलाटिलिटी स्पिल ओवर्स, मार्केट वोलाटिलिटी स्पिल ओवर्स, जमी जो ग्रेटर हाउसहोल्ड एक्सपोजर टू इक्विटी मार्केट्स विदाउट एडिक्वेट सेफ्टी बफर्स इंक्रीजेस द वल्नरेबिलिटी. सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लिकेशन कौन, डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रति एटा गोटे थ्रेट, इनइक्वालिटी एथिरे वाइड हबो एंड के शेप्ड ट्रेंड रिस्क रही, सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन. मेजर्स कौन नबा दरकार कि इन्फ्लेशन मेजरमेंट को रिकैलिब्रेट करा जिबा दरकार, फाइनेंशियल सेविंग्स को इंसेंटिवाइज करा जिबा दरकार, रियल वेज ग्रोथ को प्रमोट करा जिबा दरकार, सोशल सेफ्टी नेट्स स्ट्रेंथन करा जाऊ, देन मैक्रो प्रूडेंशियल रेगुलेशन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करा जाऊ. RBI State Finance Report 2025-26, Demography as a New Fiscal Fault Line. RBI रो स्टेट फाइनेंसेस अ स्टडी ऑफ बजेट्स 2025-26 हाइलाइट्स एटा हाइलाइट करछि कि इंडिया इट स्टैंड्स एट अ डेमोग्राफिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट. कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बैकग्राउंड, इंडिया एबे स्टेज 3 फेज को एक्सपीरियंस करूछि of demographic transition with fertility rates declining below the replacement levels. Key findings कौन? Demographic diversity across the states.
सो स्टेट्स माने तांगु यूथफुल इमीडिएट एंड एजिंग कैटेगरीज रे क्लासिफाई करा जायछि वाइडनिंग फिस्कल डेफिसिट स्टेट रो जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट रही सेटा वाइडन हेछि ड्यू टू लोअर सेंट्रल ट्रांसफर्स एंड द जीएसटी कंपेंसेशन ट्रैपिंग रेवेन्यू स्ट्रक्चर कांस्टेंट्स रही ओन टैक्स रेवेन्यू सेटा कंसंट्रेट हेकि रही इन फ्यू सोर्सेस सच एज जीएसटी एक्साइज सेल्स टैक्स एंड स्टैम्प ड्यूटीज then capital expenditure push capital expenditure continue karuchi to strengthen supported by centers special assistance for capital investment scheme debt and borrowing trend consolidated state debt it has moderated from pandemic peaks but is projected to rise gradually low research and development expenditure fiscal buffers building fiscal buffers states mane they are strengthening consolidated sinking fund and guaranteed redemption funds fiscal implications kona across the demographic categories youthful states inter youthful states re high potential achi intermediate states re revenue growth stabilizes as workforce share peaks then एजिंग स्टेट्स होचंदी श्रिंकिंग टैक्स बेस जे कि रेवेन्यू एक्सपेंशन को लिमिट कराए now what are the strategies for harnessing the demographic dividend hyper local skill alignment opportunity corridors in emerging sectors learn on pension continuum एथिरे कौन हुए एथिरे स्किलिंग एम्प्लॉयमेंट और लॉन्ग टर्म पेंशन को इंटीग्रेट करा जाए district as export hub model economic survey 2025-26 stability strength and strategic indispensability union finance minister tabled the economic survey 25-26 in parliament ahead of the union budget इकोनॉमिक सर्वे को किए प्रिपेयर करती इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिपेयर करती अंडर द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एंड हैज बीन प्रेजेंटेड एज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट सिंस 1964 state of the economy india remains the fastest growing major economy for the fourth consecutive year रियल जीडीपी ग्रोथ ताको 7.4% हिसाब रे एस्टिमेट करा जायछि फिस्कल डेवलपमेंट्स कोन रेवेन्यू कलेक्शन इंप्रूव हेछि ड्यू टू एक्सपेंशन फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्स बेस मॉनिटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल सेक्टर में देखिए बोले बैंकिंग सेक्टर एसेट क्वालिटी इंप्रूव हेछि क्रेडिट ग्रोथ रोबस्ट रही फाइनेंशियल इंक्लूजन रही थ्रू द जन धन मुद्रा स्टैंड अप इंडिया रिटेल पार्टिसिपेशन भी रही इन कैपिटल मार्केट्स एंड एक्सपैंडेड significantly IMF World Bank assessment it validated financial system resilience external sector strength India global merchandise of service export रे तार जो पोजीशन टा रही सेटा इंक्रीज हेची स्टेडीली record service exports and remittances strengthen the current account inflation trends India recorded historically low CPI inflation during the FY26 agriculture and food management record food grain production supported by favorable monsoon horticulture गोटे मेजर ग्रोथ कंट्रीब्यूटर हिसाब रे emerge हेची then livestock and fisheries they witness the sustained expansion service sector dominance रे India among the top global service exporters industry and innovation रे strong improvement देखा जायछि in innovation ranking India top global performers मानकरे position ताकू मिली in critical technologies and in infrastructure push critical apex expanded multiple fold
in FY18 national highway network significantly expand ହେଇଛି, near complete rail electrification भी achieve ହେଇଛି, power demand supply gap limited ରହିଛି, eliminate ହେଇଛି, sorry. Then environmental and energy transition. Environment and energy transition रे renewable energy capacity accelerate ହେଇଛି, education and health progress रे gross enrollment ratio जो रही it is improving across schools and higher education. Employment and skill development and labor force participation improve ହେଇଛି, female workforce participation improve ହେଇଛି, then organized manufacturing employment increase ହେଇଛି, rural development and poverty reduction रे भी पॉजिटिव ग्रोथ देखा जाइए, एआई इकोसिस्टम इवोल्यूशन इंडिया रो गोटे स्ट्रॉन्ग एआई रिसर्च और टैलेंट बेस रही, अर्बनाइजेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, हाई स्पीड रीजनल ट्रांजिट और पॉलीसेंट्रिक ग्रोथ एथरे एनहांस ହେଇଛି, from strategic resilience to strategic indispensability, survey calls for moving beyond the defensive policies. Key challenges कौन कि globally fragmented data, shift from rules based trade to geopolitical and strategic trade environment, state capacity constraints रही, bureaucratic risk aversion and policy inertia, they weak the execution, competitiveness pressure, low private research and development intensity, behavioral और civic gaps रही, जो weak civic discipline है and system building culture है, it strain the state capacity. Manufacturing measures to strengthen the economy, manufacturing को accelerate करिया पड़िबो, बढ़ाइबा को पड़िबो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को रिफॉर्म करने को पड़िबो, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ को सस्टेन करने को पड़िबो, ह्यूमन कैपिटल स्किलिंग, क्लाइमेट स्ट्रैटेजी, एनर्जी जेमती बैलेंस्ड गोटे ट्रांजिशन हबो, प्रायोरिटाइजिंग अडॉप्शन एंड ग्रिड स्टेबिलिटी, अर्बन प्रोडक्टिविटी, एआई, डिजिटल स्ट्रैटेजी ए सब ऊपर इक्वली फोकस करने को पड़िबो. Okay, and also mental health focus. Next हमें डिस्कस करबा एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी. स्नोफॉल डेफिसिट देखा जाइए इन वेस्टर्न हिमालयस, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एंड इमर्जिंग रिस्क. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर रे सीवियर रेनफॉल एंड स्नोफॉल रिकॉर्ड डेफिसिट देखा जाइए ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स. स्नोफॉल डेफिसिट कौन पाई है? वेस्टर्न हिमालयस जो रहिला दे डिपेंड हेवीली ऑन द विंटर प्रेसिपिटेशन ब्रॉट बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस. रिसेंट जो विंटर आमे बे देखिले सेथिरे वीक स्नोफॉल इवेंट्स रही, मॉइस्चर इनफ्लो रिड्यूस होइछि, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स भी अल्टर होइछि बोली देखिया को मिलिछि, विंटर टेम्परेचर्स राइज होछि एंड ए जो पैटर्न ता रहिला इट रिफ्लेक्ट्स इंक्रीजिंग climate variability rather than an isolated anomaly. Causes कौन स्नोफॉल डेफिसिट हबार वीक आउ मॉइस्चर डेफिशिएंट वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होचंदी प्राइमरी सोर्स ऑफ विंटर स्नोफॉल इन द रीजन. जेतेबेले विंटर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस ही वीक हेगला सो मॉइस्चर आउ स्नोफॉल रे भी सेथी डेफिशिएंसी देखिबा को मिलिला. अल्टर ट्राजेक्टोरी ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कर जदि ट्राजेक्टोरी चेंज हे जिवो बा अल्टर हे जिवो ताहले जो जगह रे आगु हेवी स्नोफॉल देखिया को मिलुतला से जगह रे हेवी स्नोफॉल आ देखिबा को मिलिबनी. मेनी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैव शिफ्टेड नॉर्थवर्ड एट हायर लैटिट्यूड्स. मॉइस्चर इंटरैक्शन वीकेन हे जाइछि. नॉर्मली जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस रहले से माने कोन करंदी, से माने मॉइस्चर बियरिंग विंड संगे इंटरैक्ट करंदी फ्रॉम द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल. आउ ए जो तांकर जो इंटरैक्शन बा कॉन्फ्लुएंस it has weakened in recent years. Change in the subtropical westerly jet stream. Long term climate warming.
एंड वेस्टर्न डिस्टर्बांसेस आम देखा गले वेस्टर्न डिस्टर्बांसेस कौन ये हूँ एक्सट्रा ट्रॉपिकल लो प्रेशर सिस्टम जी कि मेडिटेरेनियन ब्लैक सी आउ कैस्पियन सी ऊपर ओरिजिनेट करती एंड एमाने एम्बेडेड होता कवर होता बाय द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम accumulate moisture while passing through the west asia through ଯେତେବେଳେ ऊपर ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାସ୍ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ moisture accumulate କରନ୍ତି and ଯେତେବେଳେ ହିମାଲୟସ୍ को ସେମାନେ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତି ତ ସେ ଯୋଉ ଏୟାର ସେ କୁଲ ହୁଏ rise हुए and produce rainfall in plains and snowfall at the higher altitudes. Progress from west to east, Kashmir first, followed by Himachal Pradesh and Uttarakhand. And implication कौन ये जो snowless Himalayan winter एबे हमें experience कले कि water security threats. स्नो सेठी गोटे नेचुरल रिजर्वायर हिसाब रे एक्ट करे रिलीजिंग वाटर ग्रेजुअली थ्रू द स्नो मेल्ट एग्रीकल्चरल इंपैक्ट हे परिबो जेतबळे वाटर वाटर को ही सेठी थ्रेट अछि winter precipitation critical for the rabi crops such as wheat and mustard आ जो आगुरु जो स्नो आसंदी अर्ली स्नो इट अलाउज स्लो मॉइस्चर पर्कुलेशन increased forest fire risk dry winter ହେଇଗଲାଣି it will reduce the forest floor moisture ecological और biodiversity stress socio economic consequences ଯେମିତି जो winter tourism ଏ ସବୁ एरिया experience କରୁଥିଲା it will reduce policy and adaptive measures strengthening the monitoring systems artificial glaciers and the snow storage catchment and spring rejuvenation diversification of livelihoods all season tourism को promote करा जाऊ then snow variability into climate policy सेटा align करा जाऊ conservation of grasslands correcting policy blindness and ecological neglect grasslands से माने एबे अंडर रिप्रेजेंट ହେଇକି ଅଛନ୍ତି in global and national climate strategies even at discussions at UN climate platforms continue to prioritize the forest understanding grasslands ଏଗୁଡିକ ହଉଛନ୍ତି open terrestrial ecosystem ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଏଗୁଡିକ open dominated by grasses with sparse or no tree cover sparse tree cover ରହିଛି ଏଠି କିଛି କିଛିଟା ଏଠି ରହିଛି forest ଭଳିଆ dense ନୁହନ୍ତି they are dominated by the grasses here sparse tree cover adapted to seasonal drought grazing and periodic fires ଏଥିରେ କ'ଣ include ହୁଅନ୍ତି savannas rangelands pasture commons and alpine meadows grasslands in India grassland India रे nearly 1/4 India रो geographical area को comprise करे major regions using include Rajasthan Gujarat Maharashtra etc गुजरात रो जो कच्छ रो जो बन्नी ग्रासलैंड रही इट इज लार्जेस्ट ग्रासलैंड रीजन इन एशिया लेस देन 1% फॉल अंडर द फॉर्मल कंजर्वेशन प्रोटेक्शन इकोलॉजिकल इकोनॉमिक रोल तांकर कोन ए माने क्लाइमेट को रेगुलेट करंदी पास्टोरल और एग्रो पास्टोरल लाइवलीहुड को सपोर्ट करंदी हैबिटेट फॉर स्पेशलाइज्ड फ्लोरा एंड फौना ग्राउंड वाटर रिचार्ज नेचुरल डिस्टर्बेंस डिपेंड ऑन नेचुरल डिस्टर्बेंस रेजिम्स लाइक ग्रेजिंग एंड फायर फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखिए बोले इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड pastoralists थिला अच्छी 2026 इट इज डिक्लेयर्ड बाय जस्ट अ सेकेंड हाँ डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली लेड बाय द FAO की गैप्स कौन रही ग्रासलैंड कंजर्वेशन रे जेमती कि पॉलिसी ब्लाइंडनेस एंड मिस क्लासिफिकेशन ग्रासलैंड को ऑफन तंको ए हिसाब रे निया जाए कि सेमाने होचंदी डिग्रेडेड फॉरेस्ट किंतु सेमाने डिग्रेडेड फॉरेस्ट नुहंती कि वेस्टलैंड्स नुहंती सेमाने होचंदी गोटे सेपरेट इकोसिस्टम फॉरेस्ट सेंट्रिक क्लाइमेट बायस समस्ते फॉरेस्ट ऊपर फोकस करूचंदी ग्रासलैंड इकोसिस्टम ऊपर एतटा फोकस नाही इंस्टीट्यूशनल फ्रैगमेंटेशन नेग्लेक्ट ऑफ डिस्टर्बेंस
इकोलॉजी जमती ग्रेजिंग हैला एंड कंट्रोल्ड बर्निंग हैला मार्जिनलाइजेशन ऑफ पेस्टोरल कम्युनिटीज जो पेस्टोरल कम्युनिटीज माने रहले ताको मार्जिनलाइज कर दिया जाउची ट्रेडिशनल ग्रेजिंग सिस्टम एक्सक्लूड फ्रॉम पॉलिसी प्लानिंग लैक ऑफ डेटा एंड मॉनिटरिंग कोनसी नेशनल ग्रासलैंड इन्वेंटरी एपॉइंट नाही लैंड यूज प्रेशर भी रही फॉर डिफेंस रिन्यूएबल एनर्जी माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स सो वे फॉरवर्ड कौन हवा दरकार कि इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेक्ट हवा दरकार आ वेस्टलैंड क्लासिफिकेशन को रिमूव करा जिबा दरकार ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ग्रासलैंड्स एज डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम्स डेडिकेटेड लीगल फ्रेमवर्क गोटे हवा दरकार इकोसिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट जेमती कि साइंटिफिक फ्रेमवर्क्स को अप्लाई करा जाऊ सच एज डीपीएसआईआर ड्राइवर प्रेशर स्टेट इम्पैक्ट रिस्पांस कम्युनिटी सेंटर्ड गवर्नेंस उपरे फोकस करा जाऊ साइंस बेस्ड रेस्टोरेशन अडाप्ट करा जाऊ रिस्टोर द नेटिव ग्रास स्पीसीज डेटा एंड मॉनिटरिंग सिस्टम्स गोटे डेवलप करा जाऊ डेवलप अ नेशनल ग्रासलैंड इन्वेंटरी जोटा कि एबे नाही 10 years of Paris Agreement process progress gap and road ahead Paris Agreement को 10 वर्ष हेई आइची नवंबर 2025 रे Paris Agreement होची गोटे लीगली बाइंडिंग मन रखिबे एटा होची बाइंडिंग नॉट नॉन बाइंडिंग एटा होची लीगली बाइंडिंग क्लाइमेट एग्रीमेंट गोटे जोटा कि 2015 रे अडॉप्ट हेतला एट COP 21 अंडर द UNFCCC and एटा क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस करिथिला by extending the climate responsibility to all countries कोर ऑब्जेक्टिव आरो कोन कि ये ग्लोबल टेम्परेचर को लिमिट करे ग्लोबल टेम्परेचर राइज को लिमिट करबा होची यार कोर ऑब्जेक्टिव बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड परस्यू एफर्ट टू रेस्ट्रिक्ट द वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड वर्किंग मेकानिज्म होची 5 वर्षर साइकिल थाए और प्रोग्रेसिवली स्ट्रांग क्लाइमेट कमिटमेंट्स कंट्रीज माने से तांकर एनडीसी सबमिट करिवे नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन आउटलाइनिंग द मिटिगेशन एंड एडाप्टेशन प्लान्स ओके मेजर अचीवमेंट्स कोन थिला ए जो 10 वर्ष भितरे यूनिवर्सल क्लाइमेट फ्रेमवर्क गोटे हेची नियरली सबु जाक नेशन जे की पार्टिसिपेट करिथिले दे ब्रॉट अ सिंगल क्लाइमेट गवर्नेंस आर्किटेक्चर क्लाइमेट फाइनेंस कमिटमेंट डिप्लॉयड नेशंस डेवलप्ड नेशन से माने कोन करले $100 बिलियन देबे बोली कि एनुअली अप टू 2025 से माने प्लेज करिथिले जो बाकू कॉन्फ्रेंस हेतिला 2024 रे कॉप 29 गोटे नुवा कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल सेट हेतिला at least $300 billion annually by 2035 क्लाइमेट पॉलिसी मेनस्ट्रीमिंग करा जायछि एथिरे इक्विटी प्रिंसिपल एम्बेड करा जायछि इंडिया और पेरिस एग्रीमेंट रो रिलेशन देखिया गले इंडिया रो जो एनडीसी कमिटमेंट्स रहिछि इंडिया रो जो एनडीसी कमिटमेंट्स रहिछि सेथरे कोन होछि one of its core objective is to reduce the emissions intensity of GDP by 45%. केमिति 50% of installed electricity capacity non-fossil fuel source ru asibo additional carbon sink create kariba of 2.5 to 3 billion tons of CO2 equivalent strengthen the adaptation and climate resilience mobilize the climate finance and promote the technology transfer progress kete heichi commitment रे 50% already non-fossil electricity capacity achieve करा जाइछि ahead of schedule net zero target by 2070 एटा गोटे टार्गेट अनाउंस हेछि then leadership through the international solar alliance coalition for disaster resilience infrastructure and mission life green hydrogen solar energy climate aligned development ऊपर फोकस करा जाउछि की कंसर्न कोन कि जो नेचर ऑफ कमिटमेंट रहिछि सेटा वॉलंटरी दे लैक द बाइंडिंग एनफोर्समेंट ग्लोबल एम्बिशन होछि इनसफिशिएंट करंटली जो एनडीसीज प्लेस करा जाइछि द वर्ल्ड ऑन अ 2.5 टू 2.9 डिग्री सेंटीग्रेड वार्मिंग ट्रैजेक्टोरी हिसाब रे किंतु ओरिजिनली कोन करा जिबा दरकार 1.5 डिग्री पाथवे फॉलो करा जिबा दरकार क्लाइमेट फाइनेंस गैप जो $300 मिलियन प्रोवाइड करा जिबार जो कमिटमेंट ता हेतिला कुहा हेतिला डेवलप्ड नेशंस मानको एटा होची inadequate by developing nations equity and justice issues dilution of the CBDR in practice mitigation centric bias रहिजे way forward कोन कि enforce करा जाऊ policies मानको in a better way climate finance gap जो एटा रहिजे according to the developing nation तक bridge करा जाऊ equity और CBDR को reinforce करा जाऊ mitigation adaptation को balance करा जाऊ technology access
को एक्सेलरेट करा जाऊ एंड ट्रांसपेरेंसी और साइंस ऊपर फर्दर फोकस करा जाऊ। माधव गडगिल एंड वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल न्यूज रे कोन पई अछि इकोलॉजिस्ट जो अछंती माधव गडगिल सी तांकर एबे डेथ हे जाई ही पास्ड अवे एंड important कोन पई he chaired the western ghats ecology expert panel in 2011 and tankar gadgil commission kon koutla and it was set up by ministry of environment and forest in 2010 report 2011 रे आसीथिला mandate was to access the ecology of the western ghats जे कि गोटे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मेजर रिकमेंडेशन कौन थिला कि जो वेस्टर्न घाट्स रही एंटायर वेस्टर्न घाट्स को ईएसए हिसाब रे डेजिग्नेट करा जाऊ एंड ताको तीनटा इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स हिसाब रे कन्वर्ट करा जाऊ माने डिवाइड करा जाऊ ईएसजेड 1 होची हाईएस्ट सेंसिटिविटी 2 होची हाई सेंसिटिविटी एंड 3 होची मॉडरेट सेंसिटिविटी सेक्टरल गाइडलाइंस रे जीएम क्रॉप्स ऊपर बैन लगा जाऊ न्यू एसईजेड्स हो एंड न्यू हिल स्टेशंस ऊपर ए सब ऊपर बैन लगा जाऊ न्यू माइनिंग लाइसेंसेस प्रोवाइड हेई परिबनी फेज आउट ऑफ existing mines within 5 years in ESZ 1 and 2 okay institutional mechanism कौन proposed creation of a western ghat ecological authority under the environmental protection act development good inclusive development approach follow हो जो कि ग्राम सभा को emphasize दिया जिवो in decision making controversy and rejection face strong opposition from Kerala and Maharashtra कस्तूरी रंगन कमिटी तापर 2013 रे आसिला गोटे हाई लेवल वर्किंग ग्रुप जे कि फॉर्म हैला टू रिव्यू द गडगिल रिपोर्ट एंड इट प्रपोज्ड कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया form ho but this much square kilometer instead of the entire western ghats identified specific villages as ESA significance kono repeated landslides in Idukki, Wayanad and other regions, urbanization, quarrying, deforestation. Gadgil se first emphasize kari deithile on ecological zoning and community governance, jota ki appears persistent, raises debate on balancing conservation with development. Climate resilient agriculture. Why in focus climate variability erratic monsoon and extreme weather event ପାଇଁ କି climate resilient agriculture ଉପରେ ଏବେ emphasize କରା ଯାଉଛି climate resilient agriculture କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर होची एटा गोटे फार्मिंग अप्रोच जे कि रेजिलिएंस को एनहांस करे टू क्लाइमेट शॉक्स की स्ट्रेटजीज होची क्लाइमेट अडॉप्टेड क्रॉप्स such as drought, salinity, and flood tolerant varieties, efficient water use, soil health, crop diversification, AI based advisories, ये सब follow हुए. Why India must transition to CRA? Nearly half of India's net sown area जो रही सेटा होची rainfed. So climate projection indicate sharp decline in rice, wheat and maize. आउ जो population हमारा बढ़ी बढ़ी चलची तो food production ऊपर भी pressure बनुची. Conventional chemical intensive farming एटा ecologically और economically unsustainable. So CRA strengthens the food sovereignty and reduces the import dependence. Government initiative कौन रही छी? गोटे निकरा NMSA परंपरागत कृषि विकास योजना डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन एगुड़ी को सब various government initiatives रही now what are the key challenges की adoption are low quality एतेटा खास नहीं in bio inputs diffusion slow रही of climate resilient seeds digital divide limiting precision farming oil degradation severe रही soil degradation sorry fragmented policy approach without unified CRA roadmap so what should be the way forward कि गोटे unified national CRA roadmap बना जाओ soil और water conservation effort को strengthen करा जाओ digital advisories global best practices farmer centric and inclusive policy design को promote करा जाओ right to
राइट टू अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट न्यूज रे कोन जो एबे जो एनवायरमेंटल क्राइसिस क्लाइमेट चेंज ये सब परसिस्टेंट रेगुलरली हे चलची इंडिया हैव रिवाइव डिबेट्स ऑन एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइजिंग राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट सो द कमिशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM से रिसेंटली अमेंड करिसेंती द ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान persistent environmental crisis in India severe air pollution तो होची गोटे environmental crisis then water scarcity hela quality crisis hela biodiversity habitat loss land degradation waste management ए सब होची crisis graded response action plan कोन एटा होची गोटे preemptive और emergency framework to control the air pollution in Delhi NCR and एटा केबे originate हेतला it originated from the Supreme Court's order in MC Mehta versus Union of India implemented by CAQM in coordination with the states and the MOEFCC चारोटी स्टेज आर थाए इम्प्लीमेंट को करा जिबार ओके कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ये होची गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर दिस 2021 एक्ट कवर्स द NCR एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स एटा होची अपेक्स अथॉरिटी फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट इवोल्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रुडेंस इन इंडिया एठी किछटा एमती केसेस अछि जोथरे कि हमर एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रुडेंस जो आमर इंडिया रही एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 एटी मेंशन है फर्स्ट द मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1978 रूरल लिटिगेशन MC मेहता सुभाष कुमार वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम MC मेहता वर्सेस कमलनाथ ओके थ्रू दीज केसेस एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रुडेंस आमर कौन है गोटे सेकेंड इवॉल्व होइचे ओके जस्ट अ सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन प्रोवाइड है आर्टिकल 21 आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51A क्लॉज G what are the key environmental initiatives national air clean air program namami gange jal jeevan mission wildlife protection national NGT national action plan on climate change green india plastic and e-waste management rules international solar alliance and the paris commitments right challenges kon rahichi governance gaps developmental pressure jemti ki infrastructure hela ecosystem fragmentation coordination issues rahichi air pollution or river pollution it require the multi state coordination which is lacking behavioral or political hurdles nature based solutions NBS a climate smart pathway for sustainable development nature based solution कहले हमें कौन बुझो nature based solution होचे actions to protect and sustainably manage and restore the natural and the modified ecosystems they address societal challenges such as climate change water security food security disaster risk and pollution इगुड़ी को simultaneously provide करंदी human well being benefits and the biodiversity conservation core principle कौन nature based solution रो कि गोटे clearly identified societal challenge थिबो measurable benefit deliver होतिबो to both people and biodiversity participation ensure होतिबो equity short term need balance होतिबो with long term sustainability biological and cultural diversity maintain होतिबो operate करा जाउतिबो at a landscape or ecosystem scale not the isolated patches integrate with public policy and cross sectoral planning follow the adaptive management based on the scientific evidence major type of nature based solution रे हमर territorial ecosystem आछंती afforestation reforestation urban forest models like the Miyawaki plantations, marine and coastal ecosystem re mangrove restoration, coastline protection, blue carbon storage, agricultural landscapes re agroforestry. Zero budget natural farming, soil carbon improvement, food security enhancement, urban ecosystems रे हमर wetland restoration आसीबो, blue green infrastructure आसीबो, urban flooding reduction, mitigate heat island effect,
सिटी टेम्परेचर को केमती लो करा जिवो, एयर क्वालिटी केमती इंप्रूव करा जिवो. Okay. Enhancing the nature based solutions for an accelerated climate transformation. Enact. Enact होची गोटे ग्लोबल पार्टनरशिप जे कि COP27 शर्म अल शेख रे लॉन्च हेतिला, led by Egypt, Germany and IUCN secretariat किए होस्ट करे IUCN. पर्पस होची गोटे पॉलिटिकल कमिटमेंट प्रमोट करिबा, स्केल अप द NBS. ग्लोबल गोल्स होची प्रोटेक्शन दबा, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, ओके, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ए सब होची तार ग्लोबल गोल्स. स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस कोन एनबीएस रो? क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, वाटर सिक्यूरिटी, अर्बन हेल्थ, वेल बीइंग, एगुडी को होची strategic importance of NBS. Now, what are the challenges? Financing gap. Global biodiversity and the climate targets require the massive investments. Economic model limitations. Corporate governance gap भी एबे इरी रही, जो biodiversity they are rarely treated as a core board level priority. Policy and institutional fragmentation. Okay, now what should be the way forward? कि inclusive governance follow हो, right based approach follow हो, ग्राम सभा मानों को empower करा जाओ, traditional knowledge को इंटीग्रेट करा जाओ इन पॉलिसी मेकिंग. लैंडस्केप लेवल प्लानिंग फॉलो हो, टेक्नोलॉजी एंड मॉनिटरिंग ऊपर फोकस करा जाओ यूजिंग सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स लाइक भुवन, इसरो फॉर ट्रैकिंग प्लांटेशंस. फाइनेंस गैप को ब्रिज करा जाओ. नेक्स्ट, स्पॉन्जेस एज नेचुरल इंडिकेटर्स, natural bioindicators and bioremediators of heavy metal pollution. गोटे recent study by Indian scientists एटा से identify करछन जो fresh water sponge रहिला in the Sundarban delta, it act as the effective natural tool for detecting and mitigating the heavy metal pollution. So the study highlights their dual role as bioindicator and bioremediation agent. Sponge होचंदी को phylum रे आसंदी, porifera phylum रे आसंदी, among the oldest multicellular organism dating back to 600 million years. Mostly semane होचंदी marine, but some species inhabit the freshwater ecosystem. Extremely simple bodied structure with high ecological efficiency. की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन तांकर टिश्यूज बा ऑर्गन्स न थाए, तांकर गोटे पोरस बॉडी स्ट्रक्चर थाए, माने तांकर बॉडी रे एम्ति होल्स थाए. दे आर पोरस विथ न्यूमरस ऑस्टिया बाय पोर्स. फिल्टर फीडर्स एमाने थांती, स्पेशलाइज्ड क्वानोसाइट्स तांकर थाए बा कॉलर सेल्स टू ट्रैप बैक्टीरिया, प्लैंकटन एंड ऑर्गेनिक मैटर. स्केलेटन्स तांकर मिनरल स्पिक्यूल्स रे बना जाई थाए, जोडा सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट. हेवी मेटल्स होची अ ग्रोइंग एनवायरमेंटल थ्रेट. About heavy metals होची कोन? Elements with high density and the atomic weight. Example lead हैला, arsenic हैला, cadmium, mercury हैला. Characteristic कोन? एमाने होचन toxic but persistent, एमाने easily degrade हेई परिबेनी and bioaccumulate भी हेई परिबेनी. Bioaccumulation माने कोन? Bioaccumulation होची gradual build up of toxic substances within a single organism. माने अगर जदि तार 10% थिबो, सेटा बॉडी 20%, 30% दी बॉडी सेटा जिवो. Gradual accumulation. Okay. And role of sponges kona as bioindicators ki sponges accumulate the heavy metals at the concentrations far higher than the surrounding water. So ye gote early warning signal provide karanti for helping the long term assessment of the contamination trend. Bioremediation केमिति कि ये माने heavy metal को remove karanti. Metal ion जोटा कि sponge को attach हो जाए और become trapped in their porous body. And regional heavy metal contamination in India रे eastern India ର parts जीवा पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली NCR. ओके, ए सबु जगह रे heavy metals रो contamination रही. Southern Ocean carbon anomaly, a resilient but vulnerable carbon sink.
गोटे स्टडी पब्लिश होईची इन नेचर क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट्स अ सदर्न ओशन कार्बन एनोमली अर्लियर कौन प्रेडिक्ट होता जो क्लाइमेट मॉडल्स रही दे प्रोजेक्टेड दैट जो ग्रीन हाउस गैस है आमर वेस्टर्ली विंड है तो ग्रीन हाउस गैस राइज कर वेस्टर्ली विंड ozone and ozone depletion would strengthen the westerly wind over the southern ocean. Okay, ଆଉ ଏ जो wind गुड़ा रहिला they would shift poleward. Stronger wind माने they would increase the oceanic upwelling, bringing deep carbon rich water to the surface. And ए जो process it was expected to expose the stored carbon, reduce the southern ocean carbon sink capacity, potentially convert into carbon source. And एटा हुए कौन पे? What has actually happened? The anomaly. फ्रेश वाटर इज लाइटर देन सलाइन वाटर जोटा कि गोटे स्टेबल लेयर स्ट्रक्चर क्रिएट करे नोन एज स्ट्रैटिफिकेशन जस्ट अ सेकंड यस हाँ रोल ऑफ ओशन स्ट्रैटिफिकेशन है कि एथरे कौन हुए इंक्रीज इन रेनफॉल हम अंटार्कटिक आइस मेल्ट करिवो सी आइस ट्रांसपोर्ट हम हैविंग एडेड फ्रेश वाटर टू द ओशन सरफेस फ्रेश वाटर होची लाइटर एबे मु कहली इफेक्ट कौन स्ट्रैटिफिकेशन रे कि वर्टिकल मिक्सिंग को प्रिवेंट करिवो एक्ट एज अ लीड ओवर कार्बन रिच डीप वाटर CO2 को ट्रैप करिक रखिवो why the situation may be temporary कहीं ना thinning surface stratification in some regions rising the salinity levels जदि stratification weaken हुए ताहले deep carbon rich water upward आसीबो stored carbon to release हबो both easily and rapidly the southern ocean could shift from the carbon sink to the carbon source key fact about the southern ocean geographical एक्सटेंट में देखिए गले इट एनसर्कल्स अंटार्कटिका 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड रे एक्सटेंड होकी अछि नॉर्थ टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट it is defined by the Antarctic circumpolar current not by the land boundaries major geographical features जो रहला narrow choke point जोटा Drake passage include the Weddell Sea Ross Sea Amundsen then Bellingshausen parts of the Scotia Sea साइज एंड कवरेज होची एटा होची फोर्थ लार्जेस्ट ओशन रोल कौन ग्लोबल क्लाइमेट रेगुलेशन रे कार्बन सिंक फंक्शन हिसाब रे काम करे हीट एब्जॉर्ब करे ओशन सर्कुलेशन डायनामिक रे इट इज डोमिनेटेड बाय द अंटार्कटिक सर्कम्पोलर करंट जोटा कि गोटे स्ट्रांग ओशन करंट इन द वर्ल्ड इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस अछि अंटार्कटिक कन्वर्जेंस जोन जोटा सेटा होची इट सपोर्ट्स हाई प्लैंकटन प्रोडक्टिविटी dominated by diatoms significance कौन of this carbon anomaly कि ये limitation show कराए of the climate models in capturing the complex ocean atmosphere interaction highlights the role of the freshwater driven stratification in the climate regulation demonstrates the temporary resilience of the natural carbon sinks warns against the complacency as small circulation shifts can trigger major climate feedbacks. Now moving to science and technology section first हमें देखिबा PSLV failures and their strategic implication. ISRO एबे स्क्रूटिनी अंडर रे अछि अंडर द आफ्टर द PSLV C61 जोटा कि मे 2025 और PSLV C62 जनवरी 2026 रे फेल हे जिबा परे एंड ए जो दीटा देखो फेलियर दे वर लिंक टू द थर्ड स्टेज PS3 एनोमलीज PSLV होची पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जोटा कि इसरो द्वारा डेवलप करा जाईची फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च अक्टोबर 1994 रे हेतिला नोन एज इसरोज वर्क हॉर्स orbital capabilities design करा जाईची for LEO and the sun synchronous polar orbit PSLV रो structure होची गोटे solid और liquid propulsion system सेटा use करे PS1 होची first stage PS2 होची second stage first stage रे solid rocket motor using the HTPP then liquid stage आसी जिवो second stage रे third stage रे solid motor using HTPV
operates in the near vacuum, provides critical orbital velocity. Recent failures are linked to this stage. जो PS3 stage टा तारा रही ची, चारटे stage रो जो third stage टा रही ची, recent failures are linked to this stage. Okay, and PS4 हो ची fourth stage, liquid stage with the twin energies. नोटेबल मिशन कौन चंद्रयान मॉम जोटा कि मार्स ऑर्बिटर मिशन थिला हमर मंगलयान मेजर लॉन्चर फॉर द फॉरेन कमर्शियल सैटेलाइट्स कंसर्न्स एबे अराइज हेची काहेकि ना एबे रिपीटेडली सेटा फेल हेई चलची तार लॉन्च जोटा कि PS3 स्टेज रे से फेल हेई जाउची स्ट्रेटेजिक इंप्लिकेशन कौन कि सर्वेलेंस और सिक्योरिटी गैप्स डिफेन्स डिपेंडेंस ऑन द स्पेस एसेट्स कमर्शियल क्रेडिबिलिटी रिस्क रही मार्केट शेयर डिक्लाइन होची राइजिंग इंश्योरेंस कॉस्ट क्वालिटी कंट्रोल और सप्लाई चेन इश्यूज रही जमी पॉसिबल सिस्टमिक डिफिट जो थर्ड स्टेज रेटा फेल करी इंपोर्ट डिपेंडेंसी हेवी रिलायंस ऑन द स्पेस ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक कार्बन फाइबर कंपोजिट सेमी कंडक्टर एटसेट्रा प्राइवेटाइजेशन लिंक रिस्क रही अराउंड 50% जो PSLV प्रोडक्शन रही ना से गुड़ी हाल L&T लार्सन एंड टर्बो कंसोर्टियम को शिफ्ट कर दिया जाए सो देयर आर कंसर्न्स रेजिंग अबाउट टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन क्वालिटी अश्योरेंस कंसिस्टेंसी टीयर्ड सप्लाई चेन ओवरसाइट ब्रॉडर implications कौन कि इंडिया रो जो ambition रही as a reliable global space power it will impact that. Next, enter a reliability first phase institutionalize transparency timely release of failure analysis committee FSC findings diversify the launch infrastructure reduce the dependence on Sriharikota first track second launch site गोटे second launch site को बना जाओ फर्स्ट ट्रैक सेकंड लॉन्च साइट डेवलप redundancy and weather resilience accelerate the indigenation mission linked indigenation जेमती कि इलेक्ट्रॉनिक्स ହେଲା traveling web tubes composite semiconductor etc. Okay, next होची marine and space biotechnology India's emerging biomanufacturing frontier. News रे एथिପାଇଁ अछि India is expanding its focus on marine and space biotechnology under the blue economy deep ocean mission and bio E3. Aim होछि कि केमति import को reduce करा जिवो leadership build हबो and strategic sustainable technologies build करा जिवो. Biotechnology होछि utilities utilizes marine biological resources ଯେମିତି କି marine microbes ହେଲା algae seaweeds marine invertebrates ଆଉ fish derived compounds ଏଗୁଡିକ use करे and produces bioactive compounds biostimulants biomaterials एसबू को यूज करिकी एगुड़िक प्रोड्यूस हुए करंट स्टेटस होची इंडिया रो सीवीड कल्टीवेशन अक्रॉस 70,000 टन्स पर ईयर रही okay and they are widely used for just a second इंडिया इंपोर्ट्स कौन करे आपको इंपोर्ट्स करे अगर करागिनन एल्गिनेट्स एंड एगुड़ी को फूड प्रोसेसिंग फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज रे यूज होंदी policy support anchored in blue economy deep ocean and bio E3 initiative focus करा जाउची in building end to end marine bio manufacturing ecosystem key institutional private players होचे CMFRI C6 energy climate crew state level coastal initiative strategic significance होची India has this much kilometer coastline marine biodiversity offers alternative protein sources bio based chemicals biofuels sustainable biomaterials reduce the pressure on the agriculture and the freshwater resources supports the coastal livelihoods export competitiveness and the climate mitigation goals about space biotechnology
स्पेस बायोटेक्नोलोजी होची जे कि बायोलॉजिकल सिस्टम स्टडीज इन माइक्रोग्रेविटी हाई रेडिएशन एनवायरनमेंट रिसर्च एरियाज include these microbial plant growth and the human physiology applications space life support closed loop sustainability astronaut health management okay india ro jo progress rahichi isro microgravity biological program it conduct experiment on the microbe algae and plant systems supports long duration human spaceflight missions. Private sector participation remain limited due to high research intensity, long gestation period, and technological complexity. Strategic importance hochi egudico essential for self-sustaining space missions, onboard food production, waste recycling, radiation resistant biological solutions. Strengthens India's long-term ambition in human spaceflight and deep space exploration. What are the challenges? Limited domestic processing, import dependence, regulatory complexity, weak industry academia, ଆଉ long term funding ର need ରହିଛି। Remote sensing and India's IRS program, space technology for the sustainable development. Context होची जो remote sensing ରହିଲା ସେଟା ଗୋଟେ essential tool ହେଇ ସାରିଛି for modern governance, environmental monitoring and disaster management. With growing the climate risk, urban expansion and push towards digital governance, India जो space based earth observation system ରହିଲା it is playing a crucial role in planning and policy implementation. Remote sensing କହିଲେ remote sensing होची ଗୋଟେ ଏମିତିଆ science of observing and analyzing the earth surface without physical contact ଯୋଉଥିରେ କି satellite, aircraft, drone ଏଗୁଡିକ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। India remote sensing program ta launch ହେଇଥିଲା 1988 ରେ with IRS 1A and is operated by the ISRO. It is one of the world's largest civilian remote sensing constellations. Major IRS mission categories land and water resource satellites IRS series au resource satellite monitor crops drought soil health and the land use जो आउ IRS mission categories कौन ocean and atmospheric satellites जीवो cartographic satellites and microwave remote sensing satellites then significance कौन agricultural planning water resource management disaster management okay these are the significances. Environmental monitoring strategic security applications चैलेंज होची कि डेटा एक्सेस आउ कॉस्ट हाई रेजोल्यूशन इमेजरी सेटा होची ऑफन रेस्ट्रिक्टेड आउ एक्सपेंसिव क्लाउड कवर लिमिटेशन ऑप्टिकल सैटेलाइट सेगुडी को क्लाउड थ्रू रु से माने देखि परिबेनी लिमिटेड लिमिटेड लास्ट माइल यूटिलाइजेशन स्किल आउ कैपेसिटी गैप्स परसिस्ट करछि डाटा फ्रैगमेंटेशन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स भी रही छै। India AI mission and India's emerging artificial intelligence ecosystem. India तार AI artificial intelligence को accelerate करुची artificial intelligence ambition को through the India AI mission backed by a significant financial outlay and large scale deployment of high end computing infrastructure. India AI mission होची ଗୋଟେ national initiative designed to position India as a global leader in artificial intelligence under the vision making AI in India and making AI work in India. Core objective होची कि sovereign AI capability, equitable, affordable access, India specific AI research, foundation models, responsible, ethical AI, economic growth, productivity, public service. These are the core objectives. Key components कौन कि high performance AI compute infrastructure गोटे हबो भारत Jain AI and indigenous foundation models. This is crucial in a country with vast linguistic and socio-cultural diversity. AI Kosh, National Dataset Platform,
सो एथिरे कोन हबो गोटे सिक्योर डाटा सेट सिक्योर क्यूरेटेड नेशनल रिपोजिटरी ऑफ डाटा सेट क्रिएट हबो एक्सेस टू स्ट्रक्चर्ड एंड रिलायबल डाटा सेट समते एक्सेस करि परिबे इंप्रूव द मॉडल एक्यूरेसी एंड द रिड्यूस बायस एआई स्टार्टअप्स को सपोर्ट करा जिवो 7टा स्ट्रैटेजिक पिलर कोन इंडिया एआई मिशन फर्स्ट होची इंडिया एआई कम्यूट इंडिया एआई डाटा सेट प्लेटफॉर्म India AI Future Skills, Safe and Trusted AI, India AI Innovation Center, India AI Application Development, India AI Startup Financing. Okay, related government initiative कौन भारत जेन AI एटा होची गोटे मल्टीलिंगुअल लार्ज लैंग्वेज मॉडल सपोर्टिंग इंडियन लैंग्वेजेस सर्वम AI भासिनी भासिनी होची गोटे AI पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म AI competency framework significance होची strategic significance जेमति कि टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस रिड्यूस हबो डिजिटल सोवरेंटी एनफोर्स हबो स्ट्रेंथन हबो नेशनल सिक्योरिटी एनहांस हबो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस कौन कि एथरे प्रोडक्टिविटी बूस्ट होची डीप टेक स्टार्टअप को सपोर्ट मिलुची इंडिया रो कॉम्पिटिटिवनेस एनहांस होची वैल्यू एडेड इनोवेशन एनकरेज होची गवर्नेंस ट्रांसफॉर्मेशन सोशल इंक्लूजन रे जो मल्टीलिंगुअल एआई रहिला ब्रिजेस द डिजिटल डिवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग प्रोवाइड होची चैलेंजेस होची कि जो इंपोर्टेड हार्डवेयर को इंपोर्ट करिवा को पड़ुची सेति पई कि सो देयर इज डिपेंडेंस ऑन दैट एनर्जी इंटेंसिटी इज अ चैलेंज जस्ट अ सेकंड सो चैलेंज गोटे चैलेंज हमें डिस्कस कले Second, energy intensity. Data governance and privacy is also a challenge. AI bias or ethical risk एथरे include रहुची. Risk of algorithmic discrimination. Need for transparency and explainability. Skill gaps एथरे persist रहुची. Nanorobots in healthcare, a new frontier in precision medicine. Researcher from the Indian Institute of Science, Bangalore, se kon karchandi international recognition receive karchandi for developing magnetic nanorobots capable of delivering drugs
precisely inside the tumors. Magnetic nanorobots होउचंदी माने होउचंदी microscopic externally controlled machine जो गुडी को डिजाइन करा जाई थाए to operate inside the human body. They are made up of the biocompatible materials such as silica and iron oxide. And ସେମାନଙ୍କୁ power करा जाई थाए and guide करा जाई थाए by external magnetic fields. Okay. Structure and working mechanism. This is not particularly important. Typically helix shape माने थांती. Okay. Functioning external magnetic control द्वारा से माने function करंदी. Direction और speed तांकरो. They are dependent on the external magnetic field. And ताकर जो primary application रहिला cancer therapy, diagnostics, drug delivery, advanced diagnostic and imaging, medicine, antimicrobial application ए सबुरे सेमानकु apply करा जाई परिबो. Now what is the significance कि precision way रे medicine deliver होची to disease sites. Invasive treatment एथरे minimize होची. Minimally invasive treatment. Drug resistant एथरे combat होची. Personalized healthcare future रे personalized healthcare एथरे promote होची. Now, what are the major challenges? Ki nanotoxicity, limited understanding of long-term accumulation of in issues, in regulatory gap इतरे persist करुची, high cost and scalability issues, ethical concern भी रहुची कहना जो implantable nano sensors रही चीज़ से there is the privacy issues, risk of unequal access creating a nano divide, environmental risk भी रही चीज़ ना जो improper disposal it could lead to nanoparticle contamination in air, soil and water. Okay. Heavy lift capability ISRO recently achieve करची गोटे major milestone launching the bluebird block 2 गोटे 6100 kg communication satellite एटा गोटे about bluebird block 2 देखिया गले एटा होची गोटे next generation communication satellite features weighs around 6100 kg making it the heaviest payload. And it कोठी लॉन्च करा जायछि. It was launched to low earth orbit at an altitude of 520 km. Objective होछि कि एटा seamless mobile communication को enable करूछि from space especially in remote and undeserved regions. Commercial significance of the mission होछि कि एटा होछि ISRO third commercial mission using the LVM-3. About LVM-3 launch vehicle एटा होछि गोटे launch vehicle Mark 3 ISRO रो most powerful operation rocket एटा गोटे previously known as the geosynchronous GSLV जाको MK3 कहउतले. 3-stage configuration થાય of LVM-3 first, second and third. Cryogenic technology एथरे follow हुए which is highly complex and mastered by only few countries. Engine optimization and future upgrades ISRO एबे आ ऊपर work करूची. Cryogenic stage upgrade होची development of a high capacity C32 cryogenic stage.
Now moving to the culture and history section. India Miniature Painting Evolution School and Cultural Legacy. Golden Temple recently engaged artists from the Kangra region restoring a 200-year-old painting of Guru Gobind Singh using the traditional Kangra miniature technique and natural pigment. Miniature painting was in the small, highly detailed work of art, usually not exceeding 25 square inches, जोठी की figures गुड़ा often depicted at around 1/6 of their actual size. And they are executed using the tempera technique. Okay, जोठी की pigments mix करा जाती water and organic binding agents such as egg yolk. Major school of Indian miniature painting रे गोटे पालो school, ठीक अछि. Then अपभ्रंश school. Palo school particularly Koti, Bihar, Bengal, upperfront of Western India, especially Gujarat and Mewar. And this school served the transitional link between early medieval and later Rajput styles. Delhi Sultanate style, এটা ହଉଛି emerged Delhi Sultanate period ରେ ଏଟା emerge ହେଇଥିଲା. मुगल मिनिएचर पेंटिंग रे हमें देखिथाउ तार कैरेक्टरिस्टिक होची पर्शियन इन्फ्लुएंस तत्रे रहिची मुगल मिनिएचर पेंटिंग रे सेक्युलर थीम्स जेमदी कोर्ट सीन हंटिंग एक्सपेडिशंस एंड रॉयल पोर्ट्रेट्स. Under Akbar, it established the Tasveer Khana Royal Atelier. Jahangir का under naturalism और realism को emphasize दिया जाइतिला. Prominent artist थिले उस्ताद मंसूर. शाहजहां का under European influence Europeans मानकर greater influence थिला सेतरे pencil sketching, use of gold and silver and all. Rajput school of miniature painting हमें देखिया गले. Mewar school, artist Sahibuddin is notable. Kishangarh school, ଆଉ ବାକି ରାଜପୁତ school ଏଠି mention ହେଇଛି. Pahadi school of miniature painting ରେ Basholi school and Guler Kangra school. Then Kulu Mandi school. Company paintings ରେ Bengal school जोटा कि emerge ହେଇଥିଲା 20th century ରେ. Then significance कौन Indian miniature painting रो India cultural and religious diversity, historical record, एटा गोटे synthesis को demonstrate करे Persian, Indian and European influencers. It serves as an important source of understanding of medieval social life. एटा represent करे continuity of traditional artistic techniques and natural pigment usage. Somnath temple, the symbol of just a second unbroken faith and civilizational resilience. Somnath temple upare ame discuss karba. It is located at the Prabhas button on the western coast of Gujarat along the Arabian Sea, and ethi 12 sacred jyotirlingas achanti dedicated to Lord Shiva mentioned in the ancient scriptures including Rig Veda, Skanda Purana, Shiva Purana, Bhagavata Purana and the Dwadasa Jyotirlinga Srotam, situated at the confluence of the Kapila, Hiran and the Saraswati rivers with the Arabian Sea. The Tirth Stambh at the temple marks a straight, uninterrupted sea route to the South Pole, symbolizing Somnath is not only a religious site but also civilizational marker. Mythological origin, uh, according to tradition, temple ta बहुत थरा rebuilt ହେଇଛି in different materials ଯେମିତି constructed in gold by Somraj, then silver ରେ ହେଲା by Ravana, then reconstructed in wood by Lord Krishna, built in stone by King Bhimdev first of the Solanki dynasty after the attack of the Mahmud of Ghazni 1026 CE. Architectural style होची कैलाश महामेरु प्रसाद. Key features tall शिखर, then गर्भगृह अछि, सभा मंडप, नृत्य मंडप, intricate carvings achi, then Somapura slats, traditional temple architects of the Gujarat. Symbolism which represents the Mount Kailasha, the mythical abode of the Lord Shiva, symbolizes Mount Meru, considered the cosmic axis in the Hindu cosmology. Cycles of destruction and reconstruction ସେଥିରେ ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି କି ବହୁତ ଥର ତାକୁ reconstruct କରାଯାଇଛି.
श्रीमंत शंकर देव जन आर्किटेक्ट जे न्यू वैष्णविज्म इन आसाम रीडेवलप्ड बटद्रव थान इन Assam's Nagaon district. The birthplace of the Srimanta Sankaradeva was recently inaugurated. Srimanta Sankaradeva ये 1449 अक्टोबर रे born ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର birth ହେଇଥିଲା in Assam to a family of the Shiromani Bhuyans, a class of the landed gentry, emerged as a major bhakti saint during the 15th and the 16th centuries. से न्यू वैष्णविज्म ର founder ଥିଲେ, also known as the ଏକ ଶରଣ ନାମ ଧର୍ମ and the ମହାପୁରୁଷ ଧର୍ମ. Worshipped Lord Krishna as the sole refuge, rejecting ritual complexity and the sectarian divisions. Core philosophy कौन ଏକ ଶରଣ ନାମ ଧର୍ମର emphasized exclusive devotion to Krishna. Focused on the Sravana, listening to sacred text, Kirtana, devotional singing, elaborate ritual, idol worship and priestly dominance को reject करथिले. Promoted spiritual equality and opposed caste discrimination, encouraged unity across the state, tribe and the linguistic communities. Institutional contributions रे नामघर सोचुंदी prayer halls, 17 सोची monastic institutions जोटा की preserve करिछि religious teachings and the artistic traditions. Literary contributions ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଶଙ୍କର ଦେବ ସେ enriched Assamese literature with devotional and philosophical works ଯେମିତି କୀର୍ତ୍ତନ ଘୋଷ, ଗୁଣମେଳା, ନିମିନବ, ସିଦ୍ଧି, ସମ୍ବେଦ, ଭକ୍ତି ପ୍ରଦୀପ, ଭତିମାଜ, ରୁକ୍ମିଣୀ, ହରଣ, କାବ୍ୟା, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଉପାଖ୍ୟାନ, translated portions of Bhagavad Purana into Brajavali, etc. Contributions to art and culture ତାଙ୍କର ଥିଲା अंकिया नाट, भावना, सत्रिय डांस, बोर्गिट्स, न्यू वैष्णविज्म. इन कंपैरिजन आमे देखिया गले शैविज्म थारु डिफरेंट एटा व्हिच एम्फसाइजेस ascetic practices and tantric traditions. New Vaishnavism focuses on devotion through the chanting and community prayer. सिग्निफिकेंस होची रिलीजियस रिफॉर्म. रिलीजियस प्रैक्टिस को सिंप्लीफाई रखा जाउतला, रिचुअलिज्म को रिड्यूस रखा जाउतला, सोशल इंटीग्रेशन, कल्चरल रेनेसां, सिविलाइजेशनल कंट्रीब्यूशन. होली सिटी स्टेटस सिख हेरिटेज इन पंजाब. गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अमृतसर को आ आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को होली सिटीज हिसाब रे डिक्लेयर करछि. सिखिज्म 15th सेंचुरी रे फाउंडेड हेतला बाय गुरु नानक देव जी इन पंजाब. एटा गोटे मोनोथेइस्टिक फेथ emphasizing belief in one formless god. Khalsa tradition, it was established by the Guru Gobind Singh 1699 at the Anandpur Sahib. Sacred text of institution जदि आमे देखिबा, गुरु ग्रंथ साहिब is the eternal guru of the Sikhs, written in the Gurumukhi script. Dasam Grantha contains composition attributed to the Guru Gobind Singh. गुरुद्वारा हूँ सिख प्लेस ऑफ वर्शिप. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटी से सिख श्राइन्स मानू मेजर सिख श्राइन्स मानू मैनेज करे. खालसा पंथ रिप्रेजेंट्स द कलेक्टिव सिख कम्युनिटी. गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, अकाली मूवमेंट जोटा कि अर्ली 20th सेंचुरी रे हेइतिला. इट सॉट टू फ्री द सिख श्राइन्स फ्रॉम द हेरिडिटरी महंट्स, रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द SGPC, led to Sikh Gurudwaras Act of 1925. 5 Takhts of Sikhism re Akal Takht, then Takht Sri Kesgarh Sahib, Takht Sri Damdama Sahib, then Takht Sri Patna Sahib, Takht Sachkhand Hazur Sahib. सिग्निफिकेंस होची रिलीजियस सिग्निफिकेंस होची कल्चरल प्रिजर्वेशन रे हिस्टोरिकल गुरुद्वारा मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करा जाउची. टूरिज्म इकोनॉमिक इंपैक्ट अर्बन गवर्नेंस रे रेगुलेशन को एनेबल करा जाउची ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज नियर द सेक्रेड साइट्स. चैलेंजेस होची कि हेरिटेज कंजर्वेशन, टूरिज्म इनफ्लो, इंक्रीजिंग टूरिज्म इनफ्लो, then inclusive governance, infrastructure, environmental sustainability को maintain करा जिवो से गुडी होची challenges. Society and social justice रे फर्स्ट हमें देखिबा urbanization beyond the mega cities, rise of small towns in India.
India is witnessing India गोटे structural shift witness करुची in its urbanization pattern with growth increasingly concentrated in small towns rather than mega cities. Trend जदि आमे टिके देखिबा urbanization India रे एबे केवल metropolitan citizen regions को limited है कि नहीं small towns भी expand करूचंती. And factors कोन ए सबु shift रो कि mega cities रो saturation, decentralized economic growth, agro processing, warehousing, small manufacturing unit, retail trade, logistic ए सबु small town जाय भी ए सबु सुविधा पहुंची गलानी. So decentralized economic growth. Infrastructure and policy support, demographic and social drivers, ଯେମିତି କି village ସେଠି education, employment, improved lifestyle ହେଲାଣି, climate ଆଉ resilience factors, ଛୋଟ town ରୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି जोठी की lower pollution level ଅଛି, less intense heat island effect ଅଛି, preservation of just a second preservation of cultural identity, significance कौन significance की balance regional development, economic diversification, social mobility जोठी की education, healthcare और financial service रू proper access मिलुची, national growth strategy, small towns माने they can become the engines of the inclusive growth. Challenges होची urbanization और poverty, local hierarchies exploitative अच्छी ଯେମିତି land labor credit, governance deficit ସେଠି ଅଛି, infrastructure gap ଯେମିତି water supply, sewage network, waste management, ecological stress ସେଠି persist କରୁଛି, wetland ଆଉ natural drainage channels ର encroachment, risk to demographic dividend, youth जोठी की concentrate ହେଇଛନ୍ତି in low skilled and insecure employment, insufficient access to quality education and skill training, potential long term stagnation if structural reforms are delayed. Bal Vivah Mukt Bharat Abhiyan, India's mission to end child marriage by 2030. Union governments recently 1 year mark କରିଛନ୍ତି of the Bal Vivah Mukt Bharat Abhiyan. बाल विवाह मुक्त भारत अभियान लॉन्च ହେଇଥିଲା 2024 रे अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आर एम होची कि इंडिया को केमिति कंप्लीटली चाइल्ड मैरिज फ्री करा जियो बाय 2030 इट सीक्स टू रिड्यूस द चाइल्ड मैरिज प्रिवेलेंस सिग्निफिकेंटली ओके अलाइंस विद द एसडीजी टारगेट 5.3. legal and institutional constitutional foundation देखियो गले एटा grounded है article 21 रे of the constitution supported by prohibition of child marriage act PMCA 2006. key components होची कि appointment of child marriage prohibition officers, technology enabled portal, rapid response mechanism, large scale community mobilization, counseling, injunction orders, proactive prevention strategies, collaboration facilities etc. ओके चाइल्ड मैरिज आम देखा गले एटा हूँ गोटे मैराइटल यूनियन व्हेन वन और बोथ पार्टीज आर बिलो द लीगल प्रेस्क्राइब्ड एज लीगल हूँ गर्ल मानक 18 एंड बॉयज मानक 21. ग्लोबल सिनेरियोज रे एंडिंग चाइल्ड मैरिज हूँ सेंट्रल टू ग्लोबल जेंडर इक्वालिटी. मिलियंस ऑफ गर्ल्स वर्ल्ड वाइड आर मैरिड बिफोर द एज ऑफ 18. इंडिया सिनेरियो रे एबे रिडक्शन देखा जाइछि किंतु एटा कंप्लीटली वाइप आउट हेनी. सो transgender welfare in India. Despite progressive legal recognition, trans men or gender diverse person assigned female at birth continue to face systemic discrimination. Transgender person होचंदी is someone whose gender identity does not align with the gender assigned at birth as defined by the Transgender Person Protection of Rights Act 2019. Census 2011 से 5 lakh transgender person को record करिथिला. Highest reported number were from Uttar Pradesh, Andhra Pradesh and Maharashtra. Judicial recognition रे Supreme Court तारा नालसा judgment रे recognize करिछि कि transgender person होचंदी third gender and affirmed their right of self identification. They
ତାଙ୍କର जो जेंडर आइडेंटिटी अछि ताको लिंक करा जायछि अंडर आर्टिकल 14, 15, 19 एंड 21 रे। स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन ताको मिले ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 अंडर रे। सो ए एक्ट अंडर रे एस्टैब्लिश हुए नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन टू एडवाइस ऑन पॉलिसी मैटर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स रे इंट्रोडक्शन ऑफ अदर्स कैटेगरी इन वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, गोटे नेशनल पोर्टल क्रिएट हेछि फॉर आइडेंटिटी सर्टिफिकेशन, वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करा जायछि सच एज शेल्टर होम्स एंड स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स। एसिड अटैक्स इन इंडिया 2009 रे जे acquittal थिला शाहीन मलिक acid attack case, after a prolonged legal battle, has once again exposed systemic weakness in investigation, prosecution and survivor protection in India. Acid attack होची, wait a second. Acid attack refers to the intentional use of corrosive substance such as sulfuric, nitric, or hydrochloric acid to cause grievous injury, disfigurement, or death. Motives behind होची जेमती कि involving women motives जेमती कि जानथिबे harassment हेगला, conflicts हेगला, suspicion or infidelity, etc. Extent of the problem, acid attacks continue to be reported across India ଏବେ भी चल रही छी। legal framework कौन सब प्रोवाइड करा जायछि, भारतीय न्याय संहिता ट्रीट एसिड अटैक एज स्पेसिफिक एंड सीरियस ऑफेंस। रेगुलेशन ऑफ एसिड साइट होची जुडिशियल इंटरवेंशन, फॉलोइंग जुडिशियल इंटरवेंशन ओवर द काउंटर सेल ऑफ द एसिड विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड। विक्टिम कॉम्पेंसेशन एंड लीगल एड। की जुडिशियल इंटरवेंशन से सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज करछन जो एसिड अटैक्स रहिला एट ए डिस्टिंक्ट ऑफेंस एंड डायरेक्टेड स्ट्रक्चर्ड कॉम्पेंसेशन मेकानिजम्स। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस रे हम क्विकली गो थ्रू करनबा। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स किए एटा रिलीज करे, नीति आयोग रिलीज करे। ओके, टू असेस स्टेट्स एंड यूटीज एक्सपोर्ट रेडीनेस इन लाइन विद द इंडियाज $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट टारगेट एंड विकसित भारत 2047 विजन 2020 रे एटा लॉन्च हेतिला। एंड जो स्टेट्स जो माने अच्छे लार्ज स्मॉल नॉर्थ ईस्टर्न एंड यूटीज रे क्लासिफाइड ग्रुप हेता टॉप लार्जेस्ट स्टेट्स इन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। टॉप स्मॉल यूटी एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से हमर जिबे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव, गोवा। राइजिंग एफटीए ट्रेड डेफिसिट, नीति आयोग हिसाब रे ट्रेड वॉच क्वार्टरली हिसाब रे इंडिया रो जो ट्रेड डेफिसिट अछि विथ एफटीए पार्टनर्स इट हैज वाइडेंड शार्पली।
रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स जो इंडेक्स रैंकिंग बा रिपोर्ट देखुछंती ताको किए लॉन्च करे सेटा होची अटमोस्ट इंपोर्टेंस एटा को किए बाहर करे एटा को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन बाहर करे द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन विल लॉन्च द रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स असेसिंग कंट्रीज ऑन गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी रे कंट्रीज मानको एतरे जज करा जिवो सेंसस 2027 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बाहर करे नोटिफाई करे कमेंसमेंट ऑफ हाउसिंग हाउस लिस्टिंग फॉर द इंडियाज 16th सेंसस कंडक्टेड अंडर द सेंसस एक्ट 1948 बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एडल्ट स्किल असेसमेंट सर्वे 2026 इंडिया कोन करिवो कंडक्ट करिया जाउची इट्स फर्स्ट नेशन वाइड एडल्ट स्किल असेसमेंट सर्वे एंड एटा को कंडक्ट करा जिवो बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन अंडर द कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे फ्रेमवर्क denotified tribes enumeration in census 2027 एटा को बाहर करे किए Ministry of Social Justice recommended enumeration of denotified tribes in census 2027 जो denotified tribes माने रहिले से माने earlier list होतले under criminal tribes act 1871 किंतु बहुत गुडे DNTs एमिति भी अछंती से मानको SC ST के OBC हिसाब रे क्लासिफाई करा जाय नाही so it limits their reservation commission जेमति सच एज रेनके कमिशन हैला कि इदाटे कमिशन हैला से तांकर स्टेटस को स्टडी करबे and includes the nomadic and semi nomadic communities across India इंडिया रो LFPR records high periodic labor force survey जो रहिला reported labor force participation rate in 2025 LFPR it has showed sustained upward trend with strong rural participation awards and honors रे हमें देखिवा कर्नाटका फिल्म अवार्ड 2020-2021 लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर्स जो थे कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिली अंडर कर्नाटका स्टेट फिल्म अवार्ड 2020-2021 वेर अनाउंस्ड MS सत्यु तांको पुत्तना कंगल अवार्ड मिली जयमाला को डॉक्टर राजकुमार अवार्ड प्रगति अश्वत्थ नारायण रिसीव डॉक्टर विष्णुवर्धन अवार्ड सारा गोविंदू डॉक्टर राजकुमार अवार्ड एंड के शिवरुद्धा and MK सुंदर राज कलिंग लिटरेरी अवार्ड अनाउंस हेची and these are the recipients अच्युतानंद पति को मिली कलिंग लिटरेरी अवार्ड डेजी रॉकवेल तांको कलिंग लिटरेरी अवार्ड मिली इंटरनेशनल ओके जस्ट गो थ्रू दिस अवार्ड्स बाय योरसेल्फ एंड मु एठी आ गोटे जिंस आपन को देखाई दोची एठी अवार्ड्स अछि देन जीएस पेपर्स पाई की आंसर राइटिंग पाई की क्वेश्चंस दिया जाइछि जोडा को आपण निजे आंसर लिखि परिबे सेल्फ इवैल्यूएट करि परिबे कि मेंटर्स रो इवैल्यूएट मेंटर्स को थारो इवैल्यूएट करि परिबे ओके सो मु एठी गोटे जिंस आपन को शो करै दोची कि जो मैगजीन आपण डाउनलोड केमति करिवे ओके एठी देखिबे कि मु ऑलरेडी एठी मैगजीन एठी मु वेबसाइट एठी ओपन करिक रखी छी मु एठी कहि दोची वेबसाइट वेबसाइट होची www.rayacademyias.in आपण वेबसाइट को गले एठी आपण देखिबे एमती स्टार्ट टुडे यूपीएससी आईएएस 2025 करिक एमती इंटरफेस एठी वेबसाइट एठी आपणकर ओपन हे जिवो एंड इटी ऊपर जो बार दिया जाइछि यूपीएससी ओपीएससी बैंकिंग मेंटरशिप बुक एंड रिसोर्सेस एटी रिसोर्सेस ऊपर आपण क्लिक करिवे देन फर्स्ट करंट अफेयर्स
करंट अफेयर्स रे गले करंट अफेयर्स से जाइकी एटी तीनटी मैगजीन आपन को शो हबो फर्स्ट होची द पर्सपेक्टिव सेकंड आपन को आसीबो द दृष्टिकोण रे ओडिशा रेलेवेंट करंट अफेयर्स थाए एंड थर्ड होची ओडिया करंट अफेयर्स माने ओडिया मीडियम रे करंट अफेयर्स मासिक सांप्रतिक घटनावली ओके एंड एठी देखिबे एठी डाउनलोडिंग रो ऑप्शन अछि एठी डाउनलोड को जाइकी धर आज मु द पर्सपेक्टिव नेशनल करंट अफेयर्स कवर करेली ओवरऑल तो एठी कौन करेंगे डाउनलोड रे जाइकी एठी देखिबे कि 2023 रो सब जगह करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन एठी अपलोड हो सारी 24 एंड 25 रो भी एंड 26 रो जनवरी रो ऑलरेडी एठी अपलोड हो सारी एठी जो एरो मार्क देइची एठी जाइकी मैगजीन डाउनलोड करि परिबे राइट सो ये जो लास्ट को जो किछिटा एमती अवार्ड्स रहिला ताकू टिके आपण गो थ्रू करि नेबे मैगजीन तो मु कहिली केमती डाउनलोड करिवे so thank you for watching and thank you for your patience कि एते घंटा क्लास हैला एंड आपण माने समस्त एटे लाइव रहिले